Welcome back to Chasing the Target. Another day, another injury for India, another recurring injury in KL Rahul. देवदत्त पडिक्कल को बुलाया गया है to as his replacement because obviously KL Rahul injured हो गए हैं and we need a top order batsman. Now, परेशानी ये होने शुरू हो गई है कि will it be an inexperienced batting lineup which looks like it. Obviously रोहित शर्मा में एक्सपीरियंस है, जायसवाल थोड़ा बहुत खेले में, but then you have रजत पाटीदार, you have सरफराज खान, जडेजा, विकेट कीपर आइदर ध्रुव और श्री के एस भरत. उसके बाद आपका एक ऑलराउंडर आ जाएगा, उसके बाद आपका या तो बुमराह एंड कुलदीप एंड सिराज. तो आई मीन बैलेंस सस्टेन, लेकिन एक्सपीरियंस मार खा रही है वहाँ पे इंडियन के साइड में. एंड या आई थिंक इंजरीज का आप बहुत देख के समझ के करना पड़ेगा बिकॉज जसप्रीत बुमराह की भी अब वर्कलोड मैनेजमेंट की जो बात हो रही थी, आई डोंट थिंक अब उनको ब्रेक दिया जाएगा बिकॉज ऑलरेडी काफी इंजरीज हो चुके हैं. श्रेयस अय्यर निकल गए, केएल राहुल निकल गए, बैक टू बैक कुछ तो भी सद में लग रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम को. विराट कोहली की वापसी नहीं हो रही, तो इट्स गोइंग टू टर्न आउट टू बी अ टफर चैलेंज देन व्हाट इट वाज सेट आउट टू बी. इनिशियली इंग्लैंड को मार देंगे समझे थे, बट अब जरा बहुत इंडिया को डर होगा because you have lost an experienced specialist batsman if you want to in KL Rahul, and that's definitely going to affect their middle order. And when you see the likes of changes that England are coming up with for this test with Ollie Robinson and Dan Lawrence, उनका एडिशनल बैट्समैन ऐड हो चुका है. यहाँ पे हमारे बैट्समैन निकलते जा रहे हैं, तो अब अगर आप एक नजर लगाए टीम पे, रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, Patidar and Sarfara, I think Dono might get a chance to play. Then you've got Jadeja, you've got the wicketkeeper, you've got Kuldeep, you've got Bumrah, Siraj, and probably another one in Mukesh or Akshar, either one I think. And I think अब अक्षर पटेल की जगह शायद बन सकती है because they need the more batsmen. अश्विन या अक्षर पटेल, अश्विन भी खेलेगा आई थिंक, बट देखना पड़ेगा कि पतिदार सरफराज दोनों खिलाते हैं या अक्षर पटेल को एडिशनल स्पिनर के ऑप्शन में लेके आते हैं. इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग कि भाई इंडिया कैसा फाइट बैक करेगी. बस राजकोट में जैसा बोले ट्रेडिशनली फ्लैट विकेट्स हैं, विकेट पे जो बैटिंग करनी है, यहाँ पे इंडिया की थोड़ी बैटिंग शायद मार खाने वाली है. इट विल बी वन ऑफ दोस टेस्ट जो अपॉर्चुनिटी के तरह प्रेजेंट होने वाली है फॉर आइदर ऑफ द रजत पाटीदार और सरफराज खान, वेयर दे नीड टू कम आउट एंड शाइन. शुभमन गिल की भी ऑब्वियसली लास्ट मैच में उन्होंने काफी अच्छी प्रदर्शन की. ही मैनेज्ड टू गेट 100 in good challenging situations, but again he has to be consistent, और वो consistency अब राजकोट में उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये फ्यूचर है. विराट कोहली की अगर कोई जगह ले सकते तो इट कुड बी हिम इन द फ्यूचर, और इज डीम्ड एटलीस्ट कि भाई जो हम सोचते कि भाई इन्हों ही रहने वाले हैं. बट अदर देन दैट यस, केएल राहुल अभी तो इंजर्ड हो गए. क्वाड्रिसेप की इंजरी काफी लिंगरिंग थी उनकी एंड नहीं फिट करे बिल. और याद रखिए कि जडेजा और केएल राहुल दोनों सब्जेक्ट टू फिटनेस के लिए ही लिए गए थे, तो ऑब्वियसली फिटनेस तो क्लियर नहीं हुई केएल राहुल की, और जडेजा की भी अभी भी इफी होगी बिकॉज उनका हैमस्ट्रिंग है. तो यू नेवर नो विद एन हैमस्ट्रिंग कि भाई क्या हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, स्ट्राइड पे प्रॉब्लम आते हैं. तो अभी भी इफ शेकी सिचुएशन है इंडियन क्रिकेट टीम में इंजरीज को लेके, और अगेन विराट कोहली की एब्सेंस इज मेकिंग अ वेरी बिग इम्पैक्ट विद दैट इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप की बात करें हैं. इट्स टाइम फॉर सरफराज एंड रजत पाटीदार. अब देवदत्त पडिक्कल के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे प्रेजेंट हो चुका है उनके लिए कि भाई he'll be able to get into that 11 and he'll probably be able to get and make a mark. And obviously left hander आगे हैं एक और, तो it makes things a little bit better. आपके पास अभी जायसवाल है, अब एक मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक देवदत्त पडिक्कल आने से भी एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, एक आई मीन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट इट वुड बी अ गुड बैलेंस. बट इंजरीज का बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, एनसीए को कॉल आउट करने पड़ेगा कि भाई इतने इंजरीज हो रहे क्यों हैं, और ये इंजरीज हील भी नहीं हो रहे. लाइक अगर आप देखो जडेजा की भी जो इंजरी है, सब्जेक्ट टू फिटनेस इज फाइन, बट अगेन टिल द गाय इज नॉट क्लियर्ड आउट, आई थिंक थोड़ा बहुत रिस्क नहीं ले सकते. अभी वर्ल्ड कप सर पे है, उसके बाद आपके जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना है, वो कैसा करेंगे आप विद जसप्रीत बुमराह. जो हम ट्रेडिशनली देखे जसप्रीत बुमराह को कि इंजरी प्रोन है, उनकी लोअर बैक में प्रॉब्लम्स है, एंड अब विदाउट हिम इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगी. अगर ये टेस्ट एटलीस्ट तो खेलना पड़ेगा उनको. एंड अब तो वाइस कैप्टनसी की भी पद दी गई है, तो इट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग टू सी के हाउ ही बॉल्स. अगर आप स्पिनर्स के हेड टू हेड लिए, इंग्लैंड के स्पिनर्स 33 विकेट्स ले चुके हैं इन दिस होल सीरीज टिल नाउ, एंड इंडिया के 23, तो वो से ज्यादा और आप लगा सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह का इम्पैक्ट क्या रहा है ये सीरीज में.
बट कितना ही सदमा है केएल राहुल की एब्सेंस, विराट कोहली की तो एब्सेंस अब महसूस होना शुरू हो गई। आई थिंक आई नो थोड़े लोग पॉजिटिव रहेंगे कि नहीं बच्चों को चांस मिल रहा है, करेक्ट, बच्चों को चांस मिल रहा है, लेकिन ये जो ऑपोजिशन इंग्लैंड में है काफी टफ ऑपोजिशन आ चुकी है ये बार। दे आर चैलेंजिंग फॉर द 5 सीरीज जो सेट आउट हुआ है, एंड अभी अबू धाबी से वापस आए हैं। और आई थिंक सुनने में भी आया है कि रेहान अहमद के वीजा को लेके भी कुछ इश्यूज हो चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने सिंगल एंट्री वीजा में एंट्री ली थी इंडिया में, फिर वापस अबू धाबी जाने के बाद उनको फिर अभी भी राजकोट में तो हैं, बट आई थिंक वीजा इज स्टिल नॉट सॉर्टेड आउट, एंड प्रॉब्ली इंग्लैंड की जो बोर्ड है दे आर एंटिसिपेटिंग कि 24 घंटे में उनका वीजा का जो इशू है वो सॉर्ट हो जाए। तो वीजा की इश्यूज भी अभी जारी हो रहा, पहले शोएब बशीर के साथ हुआ था और आज रेहान अहमद के साथ फिर हो चुका है। आई थिंक रेहान अहमद को वर्ल्ड कप के टाइम पे जब वीजा दिया गया था, वो वीजा के बेसिस पे वो इंडिया एंटर कर रहे थे, बट अब एग्जिट लेने के बाद आई थिंक फिर उनको एंट्री लेना था, वो एंट्री का जो वीजा का टाइम था आई थिंक वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से उनको ये इशू आ रहा है। बट ही इज इन राजकोट राइट नाउ विद द टीम, ही इज इन द होटल, एंड 24 घंटों में सॉर्ट हो जाना चाहिए इज व्हाट इंग्लैंड की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि दे आर एंटिसिपेटिंग या होपिंग कि 24 घंटे में रेहान अहमद का वीजा आ जाएगा। बट अगेन जैसा मैं बोल रहा हूँ, इंग्लैंड की जो टीम है वेरी रिफ्रेशिंग, अभी अबू धाबी से जाके आके रिफ्रेश रिलैक्स रिजुवेनेट होके आए हैं, माइंडसेट क्लियर होता है, एंड इट्स अभी आई मीन सुनने में अजीब दिखता है कि आप टूर के बीच में जाके अबू धाबी में पार्टी करे, चिल करे, एंड ट्राइंग टू अनवाइंड फ्रॉम द क्या बोलते हैं होटल्स एंड स्टफ, बट थोड़े लोगों के लिए वैसा चलता है जहाँ पे उनका माइंड क्लियर हो जाए, या डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाता, डिफरेंट वेदर ट्रेनिंग। एंड आप देख सकते हैं हैदराबाद में जो इम्पैक्ट था, वाइजलैक में भी थोड़ा बहुत अच्छा इम्पैक्ट था इंग्लैंड की टीम का, दे मैनेज टू गिव अ टफ फाइट, बट शुभमन गिल की सेंचुरी ऑब्वियसली डिफरेंशियल फैक्टर थी वहाँ पे, एंड ऑब्वियसली जो बॉलिंग जसप्रीत बुमराह कर रहे थे दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। बट विद द एब्सेंस ऑफ केएल राहुल कितना बड़ा सदमा लगेगा वो अभी मालूम होगा अपने को कि भाई स्पेशल बैन श्रेयस अय्यर ऑल्सो, श्रेयस अय्यर को भी जो टीम करेगा कि नॉन फिट स्टिफ बैक एंड ग्रोइन इंजरी की वजह से जो बताया गया था, अब तो ये बोल रहे हैं कि ड्रॉप कर दिया श्रेयस अय्यर को, तो वी नॉट श्योर राइट नाउ इफ इट्स एन इंजरी और इफ इट्स एक्चुअली बीन ड्रॉप। नाउ इफ ही ड्रॉप मे बी यू कुड हैव गॉट हिम बैक, बट आई एम प्रिज्यूमिंग उसको जो वापस लेके नहीं आए इट्स डेफिनेटली एन इंजरी है, वरना उसको ले आते वापस अगर खाली उसको ड्रॉप करने था, या अगर उनको बीसीसीआई को अपनी इमेज प्रोटेक्ट करना था, देन आई डोंट नो। बट हाल में बीसीसीआई और अपने प्लेयरों के बीच में काफी अनबन हो रही है, ईशान किशन हो गए, या अगर श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करे, श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, सिराज को हाल में ड्रॉप करे थे एक टेस्ट मैच के लिए, तो देयर आर बीन सर्टेन इश्यूज इन द विद द बीसीसीआई लेटली, जो कॉल्स ले रहे हैं इट लुक्स वेरी अनफेमिलियर या वियर्ड कॉल्स ले रहे हैं, व्हिच डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। बट राइट नाउ जो अपने सामने है कि देवदत्त पडिक्कल को बुलाया गया है केएल राहुल के जगह पे। देवदत्त पडिक्कल का अगर आप रिकॉर्ड देखो, इट्स बीन गुड इन द रणजी सर्किट, ही इज बीन वेरी इफेक्टिव बैक टू बैक, उन्होंने हंड्रेड्स मारे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही हैज अ फैंटास्टिक रिकॉर्ड, एंड ऑब्वियसली जो आप आईपीएल में देखो मे बी इट्स नॉट द मोस्ट क्या बोलते हैं गुड वर्जन ऑफ हिम, इतना अच्छा नहीं दिखा, लेकिन बैंगलोर में थोड़ा बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है, आरसीबी में आई थिंक ये सीजन भी लास्ट सीजन एक या दो अच्छे परफॉर्मेंस आए थे उनकी तरफ से, बट ही हैज अ सॉलिड टेस्ट प्ले या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, ही हैज हैड अ लॉट ऑफ 100 इन द रीसेंट थिंग, आई थिंक 150 मारा था तमिलनाडु के अगेंस्ट एंड गोवा के अगेंस्ट। तो देवदत्त पडिक्कल क्या जर्सी पहना है भाई, हरा भरा, ये बात अल कौन सी सऊदिया, जर्सी है? आपके सऊदी अरेबिया की सऊदी अरेबियन जर्सी। और कैसे आप? हैप्पी चॉकलेट डे। चॉकलेट ये क्या है भाई, बहुत किसको? कौन सा डे? आप बोल रहे थे इंडिया में चॉकलेट डे, रोज डे हाँ है। क्या के प्रपोज डे, चॉकलेट डे, बैगन का डे, हाँ, हक तो डे, आज तो हक डे यार। यू टेलिंग मी मैन। अच्छा एकदम से लाइक एट लाइक आई डोंट नो, लाइक एकदम से आके चॉकलेट डे होता है आप लाइक, मेरे को क्या मालूम ये सब। आज तो हक डे है ना, तो पैखाना वाला, बट हक डे यानी कि हक देंगे पैखाना नहीं तो हक देंगे। बट Devdutt Padikkal called up Shreyas Iyer, ignored. Does that justify Shreyas is injured, or do you think they're still not wanting to get Shreyas back in? If I am you, 100% is justified. Yeah, justified what? That Padikkal is in the team. He's No, averaging. Padikkal is in the team. I'm saying, but He's averaging 92.66 in the Ranji yeah, Trophy. He has 3 it centuries. sound like a radio Uh, FM. भाई 92.66. भाई आप बोले थे श्रेयस सर नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लग रहा था कि श्रेयस अय्यर इज नॉट इंजर्ड बट उसको ड्रॉप करा गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर श्रेयस अय्यर अब अज्यूमिंग दैट ही वाज ड्रॉप, क्या है इन्फॉर्मेशन, क्या है ये तो बताओ। क्या देखो आपने इन्फॉर्मेशन ये था जो मैं पढ़ा था, स्टिफ बैक एंड ग्रोइन इंजरी, ये पढ़ा था मैं अ फ्यू डेज कब की अगो, बात है ये? 2-3 दिन, जब एक्चुअली न्यूज में आया था कि भाई तो स्टिफ मैच बैक खत्म एंड हुआ। ग्रोइन।
खत्म होते हाँ की 2 दिन के बाद, ठीक हाँ। है। उसके बाद आप लोग डिस्कस कर रहे थे और आप बोले थे कि भाई मेरे को लग रहा है कि he's been dropped. This is not an injury thing because you didn't read any injury news. Now, if you are saying he's dropped, he could have had the opportunity to come back into the team easily over Devdutt Padikkal, right? So what I heard from the report is that he said he was injured because they asked him to play Ranji Trophy after the Hmm. game. I अच्छा. don't know how true this is. Before the selection, he said I'm fit, but he didn't play the Ranji Trophy game. तो उन लोग भाई Hmm. बोले आप रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे तो फिर आपको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो अब ऐसी ये सिचुएशन भाई में जब केएल राहुल आउट हो गए, श्रेयस को बिठा दिए, सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि शायद इंजरी है, भाई दूसरी इसलिए चीज ये हो सकती है कि भाई he might have a slight injury and he doesn't want to risk it because he doesn't want to miss another IPL. He missed the whole of IPL last year and he doesn't want to further his injury. That's another reason. It could be another या तो reason. या तो इंजरी है, या तो बीसीसीआई pissed off he didn't play for Maharashtra to get his spot or claim his spot because he didn't want to prove a point to them, Yeah. or the fact that they just wanted a left-handed batsman in the middle order, which doesn't really make a difference. I mean, it'll be good, but yes, Devdutt Padikkal knocking on the door, 150, 103, 104, कितने की 100 माइल हिसाब 92 का एवरेज है भाई, he deserves a shout and good opportunity for him. But how big do you think will be a problem? Inexperience काफी दिख रहा अपने को बैटिंग लाइनअप में, if you look at it. Yeah, like 100%. Look, honestly, KL Rahul is a huge blow. I feel with KL Rahul, you're a much better team. And we've seen it. Like, it's not just me. Yeah. You've seen it also. South Africa के against उन्हें जो 100 फर्स्ट मारा इनिंग्स हैदराबाद में भी, फर्स्ट इनिंग्स हैदराबाद he में भी. showed ability. He's batted. You need a batsman like that. ठीक है. दूसरी चीज आपके पास जो सेकंड एक्सपीरियंस था उन्हें भी नहीं है, तो लाइक यू सेड देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव प्रेशर ऑन द यंगस्टर्स। अगर आप सरफराज और पाटीदार दोनों को खिलाएंगे देयर इज गोइंग टू बी प्रेशर ऑन देम 100% एंड देयर इज नो गारंटी दे विल परफॉर्म, बट दिस इज व्हाट वी वांटेड देम टू बी इन द डीप एंड वी वांटेड देम टू बी रिवॉर्डेड फॉर द रणजी ट्रॉफी। अनफॉर्चुनेट इट्स लाइक इन अ सिचुएशन वेयर if they don't perform, then when the guy comes back from injury, he has to leave the team, so there is a bit of pressure there, but this is what we wanted, so hopefully we'll back the kids and ठीक है, लाइक जो भी होता देखेंगे, बट एटलीस्ट दिल गेट दिस एक्सपोजर एंड ऐसा नहीं तो वैसा मिल गया अपॉर्चुनिटी जो भी है, तो नाउ ट्राई एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट ऑफ कोर्स, बट रोहित शर्मा विल बी अंडर इमेंस प्रेशर। Iyer said that he is injured, but NC medical staff in the report Hijal Bhai Boreya find him completely fit. Now, वही situation है कि is this a subject of injury, or does he want to protect himself from IPL, or does he not want to play Ranchi and just wants to stay in the national squad? If that is the attitude, then I agree with BCCI to drop his ass, because you have to, if they're saying to play Ranchi to claim a spot, then you have to do it. But Faiz, this is the biggest problem which I pointed out when the Ishan Kishan incident happened. They're not handling the stuff properly, and now people, how is this guy saying कि भाई IPL में खेलूंगा और टेस्ट मैच में नहीं खेलूंगा? How has that come about? I understand, I understand why he's doing it, this and that, but as the board and आप इतना टाइट रखते, ये करते वो करते, आप कैसे ये सिचुएशन में आगे के पास, आपके पास किशन नहीं है, अय्यर नहीं है और राहुल भी नहीं है, ऐसा अच्छा ठीक है, राहुल का तो आप साइड में रख लो, Injury, दैट वी नो ही इज इंजर्ड बिकॉज़ ही इज ट्राइंग, उन्होंने नेट्स में भी खेला, एनसीए भी रिपोर्ट करा, सब कर दिया। अब दो लोगों को ऐसा क्या हो गया, आई डोंट नो व्हाट, की दे कैन नॉट प्ले फॉर इंडिया इन दिस सीरीज, व्हाट इज द प्रॉब्लम? Tejal Bhai giving like shocking news, man. I don't know what his sources are, but he's saying reports are Ishan and Iyer to lose, and I don't think it will come to that. इंडिया में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इतना जल्दी लूज नहीं करते। आई मीन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज ऐसी जगहों पे यस आई हैव सीन इट हैपन, बट इंडिया में रेयरली आई हैव सीन सेंट्रल, अनलेस यू आर नॉट प्लेइंग एट ऑल इन द टीम। ईगो के बैटल्स, अब देखो, I'll flip it also and I'll say where the players are wrong. Both Ishan Kishan and Shreyas Iyer, they're wrong in the sense that like if there are certain things that they have to do, whether that's playing Ranchi Trophy or whatever to get into the team, they should do it. They should be disciplined enough, and they should follow the protocols. But if they don't, it's the BCCI needs to find a way in convincing them, because at the end of the day, आपका ही नुकसान हो रहा। हम लोग यही बात कर रहे थे कि भाई ईशान किशन नहीं है तो कोई और आ जाएगा, ये आ जाएगा, मगर आप ऐसे स्टेट में आ गए कि इंजरीज इतने हो गए कि देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर, वी नीड दीस गाइस इन दैट स्क्वाड, यू नीड एक्सपीरियंस, you need somebody there. New central contracts are coming this month in the end. What the hell will we do with the central contract, man? Right now, the most important thing in the world for Indian cricket is an IPL contract. All these other things will come later. I think BCCI need to come out with a statement and clarify these things, because people now are speculating. काफी चीज़ स्पेकुलेट करना ही पड़ रहा है, because आप जिस तरीके से क्रोनोलॉजी देखो, साउथ अफ्रीका में ना खेले, अब यहाँ पे ड्रॉप हो जा रहे, कैसा ड्रॉप हो रहे, पुट्टे एकदम से पुट्टों को भरे। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी फॉर देयर अपॉर्चुनिटी, रजत पाटीदार, सरफराज खान, देवदत्त पडिक्कल।
they're very conveniently, listening to the public as well, and using that public, क्या बोलते हैं, no, public will be happy because सरफराज पटीदार को खेलो खेलो बोले, but under the situation that Iyer, Ishan and KL का तो like you said injury, but Iyer and Ishan, the way they're missing out their spot is due to this ego battle. It's not like a proper way. If it's based on the form thing, then I completely agree, but it doesn't look like that. It's like an ego battle के वजह से No, दोनों अपना a year it is. It started on form only, right? They told him to go play Ranji Trophy because he's not in form. That is the why he was told to go and play, and then he didn't play. Whatever it is, उसका form का ही है the base root, and जो भी ego battle हो गया. And भाई एक और चीज हो सकता है कि injury हो सकती, which can be fixed, but maybe he got a call from Venki Mysore said कि भैया you have to play full season. बट यहाँ पे एनसीए मेडिकल स्टाफ बोल दी कि उन्हें completely fit है बोल रहे थे, and BCCI has conveyed it to the players that they are required to join the respective. देखो, that is the thing now. One sudden day you're springing upon people who are a part of the national team that you have to go and play Ranji Trophy and stuff like that, which it's good. Now maybe they're trying to make Ranji because someone a few days ago, Manoj Tiwari said to abolish this whole Ranji thing because nobody's coming out of it. Now maybe BCCI is saying now we have to get stricter and more stringent with these 11 players because they're getting too comfortable. I think जो हार्दिक पांड्या का सिचुएशन है in terms of the way हार्दिक पांड्या and all of this thing कि भाई IPL खेलो, injure हो जाओ, stuff like that. Now people are saying कि भाई you need to earn a spot. You guys can't walk into this team. But whose fault is that? That is the BCCI's fault. Why exactly. Did you so now they're probably coming through this whole process. बोलते ना process. The whole system is a joke then. Because आप अभी जो बोल रहे कि रणजी ट्रॉफी से उठाना प्लेयर्स, सही बात है, मगर फिर व्हाइट बॉल कौन उठा रहे थे? ईशान किशन थोड़ी उठा रहा था, आप ही उठा रहे थे, राइट? व्हाइट बॉल के प्लेयर ईशान किशन को, सूर्या कुमार को, जो भी है व्हाइट बॉल परफॉर्मेंसेस पे आप रिवॉर्ड कर रहे हैं. एकदम से आपको ख्याल आया कि नहीं रेड बॉल रांची खेलना है, तो आप ही ये फर्स्ट ऑफ ऑल you were picking players. Why would, if I am a Indian cricketer, why would I play Ranji Trophy when I have an IPL contract and that is sorted? I need to play 2 months over there, and then I'm getting selected also in the test team if I play T20 one day. Why do I need to play Ranji Trophy? What is the incentive for me to play? And now you're saying you have to go and play. Why? So now that's what I'm saying. Now I think they're starting this process where they want to give more highlight or more क्या बोलते हैं appreciation incentive to people to start playing Ranji, to start finding people for red ball cricket, because right now here there's a crisis where people are getting injured left, right and center. There's too much. I don't know what it is. I'm just trying to understand what the BCCI is actually trying to do. I'm not saying that there's some established thing, but what I'm seeing now, 3 players from the 4 players, Akashdeep, Rajat Patidar, Sarfaraz Khan, Devdutt Padikkal, they have not come from IPL. They've all come from this Ranji circuit all of a sudden. Whereas you see other players like Rinku Singh, all of the guys who came from IPL, they're playing for the Lions. Yeah, no, exactly. But like you were forced into this. Yeah. For example, if KL Rahul was fit, Iyer was fit, Kishan didn't do all this drama, they would have played, right? Like so exactly. That is forced into this. So now maybe to break everybody's sort of क्या बोलते complacency, जो आराम से दिमाग में है कि भाई हम ये टीम में इर्द गिर्द में है, कुछ भी कर लो दो, हमारे बाप का टीम है, whatever it is, ये जो नोशन है उसको तोड़ने के लिए शायद इनला ये प्रोसेस आप स्टार्ट करें, which will obviously any process like is basically आप खुद के पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मार दे रहे, फिर खुद ये करना चाह रहे. अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि ये लोग एक मैच खेले एंड ये वापस टीम में आके देन दैट प्रोसेस लाइक देन वो जो रांची खेल रहे हैं सब फिर इट विल जस्ट गेट अगेन no point, no value. Yeah, like it is a whole. I also don't understand it. I'll be basically they want them to go to that Ranji team, play 1 innings, play 1 hour, play 2 hours, just कि भाई हम बोले तो वो करना, वैसा सिचुएशन दिख रहा अभी. मेरी बात मानो. या ठीक है, मगर फिर आप अब मेरे को एक बात बताओ, आप विराट कोहली को बोलेंगे रणजी ट्रॉफी खेलो जाके अभी आफ्टर योर ब्रेक? वो तो पॉसिबल नहीं है ना. विराट कोहली का लेवल तो अपन लाइक रोहित शर्मा तो कैप्टन है, यही है राइट. फर्स्ट पे मसला तो यही है. अब अगर दैट इज द थिंग, आई एम नॉट सेइंग कि विराट कोहली इज on the same level as every player. No, he is a different level. But if you have a different a different note for different person, if you have different strokes for different folks, whatever you want to call it, then it's going to be problem. There is going to be a problem. Then people will show attitude, people will show ego. Virat Kohli now, he's 1 month away from the game. It's a break. It is his personal reason, no problem. Will he play for Delhi and then come? Will he go to NC? So now this is where the whole thing is going to get
it's going to get screwed. This is I the mean, problem. then see if you look at it from a contract perspective, Virat Kohli, Rohit Sharma, and I think Jasprit Bumrah, these three are the only people who have like that A-star contract, right? The A+ contract. So I think in that way, you have to But in the realize contract, as it's a not player. written, in that contract, it's not written that with that A contract that you should not play Ranji Trophy or you should play Ranji Trophy. It's not No, written there's there. not. But see, somewhere down the line, as a person also as a player, I would understand if Virat Kohli is not going to play Ranji and come, and I have to play Ranji and come. Like I'll be very honest. That's what it. I know it'll be annoying, but for प्रॉब्लम like तो वही है भाई, it's यही like तो saying प्रॉब्लम Rohit Sharma को जाके बोलो महाराष्ट्र की टीम से खेलो, like captain है उन्हें, plus Virat Kohli is like right there, right? Like you यार can't say मैं that. वही तो बोल रहा But हूँ, अगर आप for people who are fighting for spots in the team, these guys are not fighting for spots. Like Jasprit Bumrah, Rohit Sharma, Virat, they're not never going to fight for a spot in this team. नंबर 3 आपका विराट ही रहेगा, कैप्टन आपका रोहित ही रहेगा, यही बॉलर तो आपका है। प्रॉब्लम है। आप ये कल्चर जब डेवलप कर रहे हैं कि आप किसी और को ज्यादा रिवॉर्ड करें बिकॉज वो सीनियर आदमी है, ये है वो है, प्रॉब्लम्स तो वहीं आएंगे। आपको यही तो बोल रहा हूं मैं, जब आप अगर फॉर एग्जांपल हम दोनों इक्वल है, हम जब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट क्लास में बैठा हूं आप इकोनॉमी में बैठे हैं, राइट? ऐसा थोड़ी है। मगर जब अगर ऐसा करेंगे, अगर आप 5 स्टार में बैठे हुए, मैं हॉस्टल में बैठा हुआ हूं, तब तो प्रॉब्लम आएगा अब कैसा राइट? नहीं, अब कैसा रहता हूँ सुबह, इसमें बोलता हूँ आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप और मैं दोनों कंपनी में काम करें, आप 15 साल दे दिए अपने करियर के, मैं अभी 5 साल दिया, 2 साल दिया हूँ मेरे करियर के, राइट? आई कैन नॉट एक्सपेक्ट के जो पर्क्स आपको मिल रहे हैं वो मेरे को मिलेंगे, राइट? पर्क तो जब आप सैलरी की बात कर रहे हैं वो तो अलग है। सैलरी नहीं बोल, like what do you call What is the that? main goal? What is the main goal? To play for Indian cricket, right? I'm not talking Yeah. about, ठीक है, you can get paid more than me, or if you're 15 years older, you can get paid for more than me. You can get a car, you can get different perks. Perks are different. I'm talking about playing for the team, the conditions. Why am I like? Because look, the thing is, at the end of the day, if playing for the team, everyone should have the equal kind of correct. But again, what you will bring with 15 years of experience is what you've done with this organization, what you know is about the whole team and the environment of the team. So it'll be easier for you to fit in any situation I throw you in. I'm just saying it from like just justifying तो नहीं बोल सकते. I know where you're coming from कि भाई सबको same pedestal पे डालना. But कभी-कभी वो चीज apply इंडिया में तो होती नहीं. You never and you always have like players will get away. I'm not saying, like, I understand what you're saying, but I'm saying the problem is this only. This is why there is problems. I'm not saying कि like ठीक है, अगर आप मेरे को मालूम है उन्हें नहीं खेलेंगे दिल्ली के लिए, उन्हें मुंबई के लिए नहीं खेलेंगे। प्रॉब्लम तो वही है कि अगर आप उसको नहीं बोलेंगे दिल्ली के लिए खेलो और आप ईशान किशन को बोल देंगे या श्रेयस अय्यर को बोल देंगे, उन लोग भी नखरे उठाएंगे। उन लोग को भी पैसे मिल रहे हैं आईपीएल से, इधर से उधर से, उन लोग को जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, यही तो चीज है फसाद की जड़ पड़ी आईपीएल। अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप बोल दिए जितने भी आप सीनियर हो, अगर आप 1 महीने का ब्रेक ले रहे हैं कहीं काम से, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं शो, मैं 1 महीने का छुट्टी ले लिया, ठीक है, आप प्रोड्यूस करें, अब हाथ साफ करने के लिए आई एम नॉट गोना स्ट्रेट अवे टेक ओवर, आई विल से फर्स्ट यू स्टे विद मी 1 or 2 shows and then so it's like that, you go play a bit of Ranji Trophy and then come back. That's what I think. Like if Kohli is out for a month, you should go for a, if that is the rule that everyone should play Ranji Trophy, then he has to play also. If that's not the rule for everyone, then it shouldn't be for him either. But I think even if you ask them to play maybe 1 or 2 matches, Virat Kohli not that kind of guy who will say no. Like he'll just play, like he'll say khalas. But the problem with these that guys is not the problem. Exactly, they won't ask him. What is the main problem? The problem is not Virat Kohli. The problem is the board. That is my biggest. Like Tejas by saying KL also played domestic before. We saw that Asia Cup. Rahul played. Pujara plays. Rahane plays. These guys, Rahane, Pujara, have been playing for India for how long? Right, now for the last days, they play under Dhoni, now they play under Virat Kohli, and then Rohit Sharma also. They played under 3 captains. They still go and play Ranji Trophy. So if they're playing, then there is no problem. So and Rohit Sharma, now for 1 second, just move Virat Kohli. That's what. Why is then Ishan Kishan, Shreyas Iyer reluctant to do that? Let's not bring Virat Kohli and Rohit Sharma 1 second. Then they should just listen to that, no? Based on what we're seeing with other senior that is players. the question. Why aren't they listening? That's the problem. Like what you said, it's IPL sir पे चढ़ गया, plus the fact that उनकी self respect was on the line कि भाई हमारे को ऐसा, and you have not dealt with the problems. जो भी उन लोग करे थे, आप deal नहीं करे. Are you trying to show कि भाई मैं boss हूँ, आप निकलो यहाँ से? You have to deal with the issue. अगर कोई आपका बच्चा कोई गलती करा, आप थोड़ी उसको भेज देंगे अंटार्कटिका. Like you have to explain to him what mistake you made, and then you like then take it from there. That's my opinion. I don't think
I'm sure उन लोग गलती करे, 100% गलती करे, वो मेरे को भी मालूम है, but at the end of the day, organization needs to deal with it. This is not the way to deal with it. आप ईशान किशन का आप like you know when we had that conversation, everyone said कि he should get punished. ठीक है, क्या हो गया उसमें? Shreyas Iyer has also copied the same thing. It's not like it's not fixed the problem. The problem is still there, and the board is not being able to solve it. ना फॉर बोर्ड के हिसाब से कैसा रहेगा मालूम, अगर हम एक प्लेयर को भी ऐसा कर दे तो पूरे अब जो खड़े हुए हैं यही होने वाला था, राइट? लाइक इफ दे bow down to any of the players and say अरे भाई हमारी तरफ से ये हो गया स्टेट, वो इम्पोर्टेंट से एक को करे दूसरा भी हो गया. हाँ वही तो, they don't want to give that importance to anyone and say कि anyone is going to do this, they'll get reprimanded. वो तो कंपनी का वही रहेगा ना कि भाई, yeah, that's what, and they're out of the team now. If they want to play, they have to come to them. They will not go to them. No, that's how it's going to be. So then what is going to happen? You're going to lose players. That is what's going to happen. The ego तो कंपनी की रहेंगी ना, like ego तो that is मेरे हिसाब से वही की गलती है. Yeah, अब वो अगर देवदत्त पडिक्कल ये सरफराज करके तो then they'll win. They'll get they'll we don't need you in the red ball format, right? So they who lose it out more at the end of the day? It's Shreyas Iyer, Ishan Kishan, these guys. I don't think so, because the thing is they are going to go. Shreyas Iyer is going to lead Kolkata Knight Riders in the IPL. He's going to, for 1.5 months. What are you going to do? 10 months of your life. He's going to get paid for the whole. Like you see, Padikkal, like these guys' salary, you get paid for the whole year in those 2 months. You will get paid. Okay, no problem. Then, but again, as a cricketer, you would want to play also, right, for your country. No, of course you want to play, but he will say कि भाई I will play thing, and then T20 World Cup में अगर आप मेरे को select नहीं करेंगे, ठीक है. अगर you're taking a huge chance by taking these 3-4 youngsters, and if they don't perform, then what's going to happen? You're going to go back to them. So it's going to work the other way too. I don't think either way. Yeah. They're not worried about it. Now for Ishan Kishan, the challenge will be if he prolonged anything further, he has a lot of competition in Rishabh Pant coming in, right? Subsequently, Shreyas Iyer का कौन है? KL Rahul already है. KL Rahul वापस आ सकता. So मेरा point ये है कि आप इसको क्यों बनाना चाह रहे हैं इंस्टीट्यूशन को? आप like solve कर दो प्रॉब्लम. अगर आपके पास पावर है, solve the problem, bring him and talk to him. That is a simple solution. You don't need to do all this. भाई इसको प्रिंसिपल के जैसा उसको बाहर रखो, ये करो. We're not in freaking Conti anymore, bro. We're like in it's like you're playing cricket. There's two mature adults can handle it. Even if he's behaving badly, they can, as an institution, they can freaking solve the problem. That is my simple thing. That's the thing. What they've been told till now, they're not following it from BCCI's purview, right? Like from where they're sitting, saying, "भाई तुम खाली जाओ झारखंड में नाम लिखा के बैठ जाओ." मगर ये आपको कौन बोले ये कि उन लोग बोले खाली नाम लिखाओ वो कराओ? ये ईशान किशन जब दुबई गया, दुबई में वापस आने के बाद they said to play to get ready for the England. ये I mean वो रील्स में पढ़ते ना, देखते अपन. So वो तो solid information है नहीं ये. अगर solid भी है, if it is like from a confirmed source, you still haven't heard from Ishan Kishan, you still haven't heard from the Iyer, so we don't know exactly. From Ishan की चलो Iyer का तो fresh है, उसको तो injury करार दी है with that groin thing. That's what I read. Rahul Dravid said this in the PC. Yeah, Rahul Dravid said. What did he say in the press conference? No, he said in the press conference that there is no issue, there is no disciplinary. उन्हें तो issue नहीं, but he is saying उन्हें अपनी availability देगा, ये वो देगा, and I think वो गलत बोला उन्हें. फिर अगर आप मेरे को बोल रहे हैं कि उन्हें ये करना है, रणजी ट्रॉफी खेलना है, that's what Rahul Dravid said, right? But he said there's no disciplinary issue. But apparently there is sources saying that there was disciplinary issue. That's why they told him to do all this. So at the end of the day, whatever the problem is, ये आप अंदर घर में solve कर दो. Why you don't need to clean this in clean your laundry. But वो तो दिख के आएगा ना, कैसा भी देखो. अगर आप दिखा रहे इसलिए दिख के आ रहा, आप sources leak करो. हाँ, but anybody who's watching cricket right now would be like, अरे भाई ईशान किशन किधर है? 6 महीने से दिख रहा नहीं. या श्रेयस अय्यर को एकदम से क्यों गिरा दिया after performance like that? Supposedly पहले बोल रहे के stiff back and groin injury, ये तो मैं खुद पढ़ा. उसके बाद आप बोल रहे हो कि भाई आप महाराष्ट्र जाकर, तो वो तो खुद ब खुद लाइक देखो, आप न्यूज नहीं दी अभी तो पब्लिक को तो समझ में आ जाता. भाई पब्लिक पागल थोड़ी है. नहीं, मगर हमारे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ. वी डोंट नो व्हाट इज द प्लेयर्स पर्सपेक्टिव. वी डोंट नो व्हाट, बट वी फिगर्ड आउट विद हार्दिक, वी फिगर्ड आउट विद ईशान, एंड वी फिगर्ड आउट विद अय्यर दैट देयर इज समथिंग. मैं वही तो बोल रहा हूं. उन्होंने बोला कि ही हैज टू गो प्ले, मेक हिमसेल्फ अवेलेबल. वी डोंट नो व्हाई ही सेड दैट, बिकॉज़ ही डिडंट गो ऑन अ फिजिकल इंजरी ब्रेक, ही वेंट ऑन अ मेंटल ब्रेक, सो ही इज स्टिल फुली फिट फिजिकली टू प्ले. तो वी
don't know why he's told them to do that, right? That is what we need to find out, and then we can. And that's what I'm saying. The people who know it, they should solve that problem. It's simple as that. Because मैं बोल रहा हूँ, आपके जब इतना पावर है, आप ये सॉल्व कर दे सकते हैं. अगर एंड ऑफ द डे ठीक है, एक बंदा इतना बुरा कर दिया, उसको बैनिश कर दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम. मगर अब श्रेयस अय्यर भी आ गया, कल के दिन कोई और आ जाएगा, ये आ जाएगा, यू नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, खाली आपके प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं. बट वही है ना, प्रॉब्लम का थोड़ा बहुत हल दिए भी तो वो भी लोग उतना ही stringent है ना. They're also that equally irritated and annoyed that they also don't want to stoop down and go and play Ranchi and stuff. It's like थूक दे रहे उनके ऊपर कि हमारे को बोले कि Ranchi खेलो. So it's like two ways है, but yes, you नहीं, can कुछ solve तो this हुआ over money. होगा कि उन लोग नहीं जाके खेल रहे. बिकॉज राहुल तो गया खेलने, राहुल भी उसका तो मैं वही तो और बोल रहा, राहुल गया, रहाने गया, हाँ, कुछ तो अब हुआ पुजारा होगा, उन गया, लोग नहीं खेल रहे. तो हमारे को ये नहीं मालूम, ये बात, ये तो या तो मालूम कर महाराष्ट्र वाले श्रेयस अय्यर को नहीं लिया. आई डोंट नो. कुछ तो हुआ होगा. फाइनली सरफराज का डेब्यू होने जा रहा है. यस, इस बार की खुशी बहुत है कि सरफराज आफ्टर लॉट ऑफ फाइट एंड स्ट्रगल एंड अभी गारंटी कंसिस्टेंसी. नहीं है वो. बट अब मोर लाइकली बोल सकते हैं कि भाई, हाउ यू गोना प्ले दिस 11? रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, पडिक्कल, पटीदार. Who's going to be a keeper? One won't play. I Jadeja. think either you Jadeja. drop Padikkal or you drop Sarfaraz. Probably Padikkal will get. Padikkal will play, bro. If Padikkal को तो बुलाए उसके लिए, then I don't know. नहीं, they called him for. But Sarfaraz already waiting, right? He's already waiting, so he gets first preference. Like how Patidar got first preference over Sarfaraz. Sarfaraz को जब बुलाए थे, he had to sit on the bench. So now, if you play Padikkal, then Sarfaraz sits. And also, Aksar can play as a specialist batsman. Jadeja can also. So there's still, we don't know what Jadeja's fitness is as well. Yeah, But these both were subject to fitness anyway, Rahul and Jadeja. So you still don't know. Now the ultimate question is, with all these injuries, what are we going to do with Bumrah? Because Bumrah needs to be rested in the fourth at least test. With Jasprit Bumrah, आपको खिलाना पड़ेगा. And then if you win the test match, maybe fourth test you can bench him. फिर fifth test match में आप उनको खिला सकते हैं, वैसा कर सकते हैं आप. मगर I think third test match तो उन्हें खेलेंगा. Because अभी तो 10 दिन का break तो मिल गया उसको, पूरा break तो मिल गया. So now plays the third test. Hopefully he's okay. And then fourth test, maybe if India win, then he can take a break. And then fifth खेल सकता. Yeah, but a batting lineup inexperience will be a very big problem. वहां पे देखना है कि भाई स्पिनर आल्सो नीड टू गेट सम मोर विकेट, बिकॉज राइट नाउ इंग्लैंड के स्पिनर्स के 33 है एंड इंडियन स्पिनर्स 23. बुमराह का इंपैक्ट उतना बड़ा है कि भाई बाकी तो आई थिंक बुमराह ही निकाला विकेट्स. गलती मैनेजमेंट को है इन सब में. जब साउथ अफ्रीका में ईशान किशन खेलना था तो क्या जरूरत थी जितेश को खिलाने की? एक प्लेस के लिए मैनेजमेंट खुद ही इतने ऑप्शन कर देता है तो इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है. या आई मीन वही था मेरा भी आर्गुमेंट कि ईशान किशन जब आपका सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है, उसको खिलाना था आप वहां जाके. लेकिन अगर आप जितेश को भी ला लिए, आप संजू को भी ला लिए, तो जब आप इंपॉर्टेंट जैसे श्रेयस और इन लोगों की जगह आप बचा के रखते हो और यू नो इवन डिस्पाइट इंजरीज एंड स्टफ यू लेट देम यू नो leave the camp and then they come back walking into the camp. Yes, they have their own stature in this thing. Then Ishan Kishan should have got that same respect. That is why I completely agree with the statement, because अगर आप कुछ तो करे होंगे कि इन लोग नहीं कर रहे हैं ये सब. It's not just like attitude, ego. Of course ego is the big part of it, but कारण जो है that is a big thing. कुछ तो करे उसके साथ जो ऐसा बिहेव कर रहा, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं. वही तो बोल रहा हूँ मैं, like 100% something happened. एंड नाउ आप बोल रहे ये करो वो करो ये करो. अब उन लोग भी बोलेंगे भाई हम नौकर नहीं है आपके, लाइक ठीक है, लाइक we're a public servant, we play for India and everything, but you're going to treat us like crap. Then we also demand some respect. There must have been some problem which we could have solved. प्रॉब्लम तो देखो एविडेंट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, लाइक फ्रॉम व्हाट वी आर मेकिंग आउट जस्ट बाय लुकिंग एट टीम्स एंड लुकिंग एट द स्टेटमेंट्स एंड लुकिंग एट व्हाटएवर इज बीन टोल्ड टू अस, वी कैन फिगर आउट भाई हार्दिक एंड रोहित के स्पीच में प्रॉब्लम्स है, वो अपने को मालूम है. अक्सर बोल रहे ईशान किशन के साथ जो ड्रॉप करा उन्हें एकदम दुबई गया, वो प्रॉब्लम वो एक प्रॉब्लम दिख के आ गई कि भाई ये बंदा हार्दिक पांड्या के साथ कहीं कुछ चिल कर रहा है जबकि ही शुड बी इन द एनसीए. लाइक दैट इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी फिगर्ड. अय्यर का immediately after the test they said stiff back and groin injury, and then I don't know where this information came from that he has to play the Ranchi thing to qualify as a batsman. Suddenly आप उसकी subject to Ranchi trophy उसकी जब selection डालेंगे तो फिरेंगे किसकी भी. So the point यही है कि भाई they're not clear, yes, but also it's like it's problem on both the sides. Like for a player, he can't get complacent कि he's always going to be in the 11. They probably want to make that clear to them, but they're not making it very clear in the right way. From BCCI's perspective, where they're wrong is that the information, the way they're trying to put it out, it's not coming out correctly, and they need to sort it.
and they're shying away from the problem instead of solving it. They need to solve the problem. Yeah, That is the biggest thing. They need to solve that because it's in their hands. The player can't solve the issue now. They made a mistake. They can't force themselves back in the team. They don't have that much power. It's the management that has to do it, right? So politics to chalte rehte hai bhai cricket mein. That is unfortunate part of the game. You can't do anything about. I mean, you can do things about it, but this is part of the part and parcel. यही होता है कि किसी बैट्समैन का कॉन्फिडेंस गिराने के लिए जब सरफराज पहले से ही टीम में उसको पहले नहीं खिला रहा हो और प्लेयर बाहर में आया हो उसको खिला रहे हैं. आई थिंक उनको लग रहा है कि पडिक्कल शायद खेलेगा या नहीं खेलेगा, बट आई डोंट नो. पडिक्कल की एंट्री ऐसा बता रहे फॉर मेडन टेस्ट एंड ऑल ऑफ दिस दैट ही इज गोइंग टू प्ले, जो मेरे को सब फील आया कि भाई इसको तो खिला ही दे रहे. आई डोंट नो, अभी भी लॉट ऑफ पीपल सेइंग पटीदार एंड सरफराज विल गेट इनटू द टीम. Both of them, and I'm still not sure because the way the articles are written, it's like Padikkal definitely going to get in the team despite anything. But why do you think that? Then why didn't Sarfaraz play over Patidar? I don't know. I know chronologically it'll be like what you're saying, but the way it's saying he called up for maiden test and stuff like he's called up for one test, right? I think subject to the fourth test अभी नहीं है उन्हें. या अगर उन्हें सरफराज के आगे खेले हंगामा हो जाएगा, हम लोग ही करेंगे हंगामा. 100% करेंगे हंगामा. He's there as the squad player. If he goes and takes Sarfaraz's position, then why the hell did you take Sarfaraz before him? या वही तो है, वो देखना पड़ेगा ना क्या अल्टीमेटली 15 को मालूम होगा. बट आई एम जस्ट सेइंग जिस तरीके से मैं वो पढ़ा था कि मेड इन टेस्ट दिस इन टेस्ट एक बताया कंग्रेचुलेशन. वो तो सरफराज का भी बोले थे ही इज मेड इट एंड दिस एंड दैट, टू ब्रदर्स आर बोथ गुड रिप्रेजेंटिंग इंडिया. ये तो सरफराज का भी था. दैट्स जस्ट I think it's just because someone got injured he's there. If he plays, there will be controversy if he plays over Sarfaraz. So I think it will be safer. They'll probably drop Padikkal, bring in Padikkal, and get in Sarfaraz. Again, there's controversy. Like I don't agree with that either. I will create also. But Padikkal को मौका दे दी, वो सारे इतना मौका दे दिया कुछ in the blow. No, like I think it just makes sense that you give Sarfaraz and Patidar the chance, and then Padikkal. Let's see what happens if आगे जाके 4th, 5th test में maybe जब तक राहुल आ जाएगा. Yeah, main guy for you in this test now, considering injuries and everything. Who's going to be your main? I think it's your bowling, your whole bowling unit: Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Siraj, Akshar Patel, if Jadeja plays, Jadeja, Ashwin. These guys will be your main guys. Whoever is your bowling quartet, you need to pick more wickets and faster than England, and put that Baz ball under pressure, put their batsmen under pressure, then and relieve pressure of your own batting. कि भाई ठीक है, हम लोग उन लोग को 120 में अलॉट कर दिया, आप जाके आराम से बैटिंग करो. या अगर जो भी है, like make sure that you don't leak so many runs that your batting goes under pressure and have to chase like 200 plus in the 4th innings. फिर थोड़ा सा परेशानी हो सकती. रेहान अहमद का भी वीजा का इशू हो गया अभी आफ्टर कमिंग फ्रॉम अबू धाबी, बिकॉज़ आई थिंक यूजिंग द वीजा दैट ही वाज यूजिंग फॉर द वर्ल्ड कप. क्या कि सिंगल एंट्री पे उन्हें एग्जिट मार दिया और फिर वापस आए जब फिर प्रॉब्लम हो गया. तो 24 घंटे में फिर उसका वीजा का सिचुएशन सॉर्ट होगा. तो yeah, that is also happening over there. But yeah, he's in Rajkot right now. He's confident कि हो जाना तो चाहिए मसला के बिना. Problem with Ishan Kishan is he has not reported to the NCA. Yeah, I mean that's what it is. Why would he report to the NCA if he knows like अरे ये सब होने वाला है कि जहाँ पे मेरे को मेरे को ऐसा ट्रीट करे and after me being in this team for 6 months मेरे को नहीं खिलाए, उसके बाद में ब्रेक लिया तो इतना उस पे भी प्रॉब्लम आ करे. तो it's just unclear, not clear norms, making up new rules every day, and that's why the people are like getting annoyed with it. Single entry visa tha which problem. You read this comment you said just now, the Ishan one, he is not reported to NCA. Yeah. And training with Hardik and Baroda, that is what is going against him. बड़े भाई वही तो है. why is he not reported? उन्हें तो भाई हर जगह बेंच प्लेयर था. उसको आप वर्ल्ड कप लेके गए बेंच पे बैठा, उन्हें एशिया कप लेके गए बेंच पे बैठा, आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बेंच पे बैठा, साउथ अफ्रीका लेके गए बेंच पे बैठा. उन्हें तो हर जगह जा रहा है आपके साथ. यहाँ पे क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहा? कुछ तो वजह, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको, कुछ तो करें लोग जो उसको उंगली करे. एंड दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दिस. Well, time ही बोलेगा 2 दिन के बाद team. Because right now we're only hearing reports from BCCI and like what they want, what they say, but they're not telling us what they did to the player or what they said to the player. Why is the player pissed off? They've not told us that, right? They've just said from their side, "Bhai, aap Ranjit." It's like I don't come on the show and then Fez says that Mustafa didn't report or whatever, but we don't know what my side of the story is. That is as simple as that. आप उन्हें रिपोर्ट क्यों नहीं करा जब उन्हें पूरा टीम के साथ फिर रहा फैज 1 साल बेंच पे बैठा, 200 मारा, उसके बाद उन्हें बेंच पे बैठा.
Yeah. जगह पे ही नो प्रॉब्लम, एकदम से उन्हें नहीं रिपोर्ट कर रहा, तो कुछ तो हुआ गड़बड़। यही तो वो तो बहुत गड़बड़ तो है, बट वही है कि ईशान किशन का वही स्टेटमेंट तो आ भी नहीं सकता बेचारे का, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ वही तो बोला तो बोल रहा हूँ, मैं खत्म यही हो तो जाएगा। समझाना लाइक दे चाह रहा डोंट हूँ हैव आपको, दैट मच तेजस पावर भाई ना। को भी। मैं नहीं आपको बोल रहा वही हूँ कि आप जो बोल रहे हैं सही बात है, लाइक एवरीथिंग इज करेक्ट कि उन्हें नहीं रिपोर्ट करा, उसकी गलती है, उसमें सब है। बट भाई आप ये समझो कि ये सब क्यों हो रहा, और ये मैं और आप नहीं जान सकते, जो जान सकते दे हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। Yeah, I mean, even if you're annoyed with him, you told him the way to come back into the team. You told him to play, supposedly, you told him to play a match in the thing. The problem is, why is he reluctant to do that, right? So that is where we're not able to Exactly. understand. Ishan is training with Yeah, Hardik and Krunal Pandya preparing for IPL. That's why BCCI. So why is he ठीक है, training with them? हम मान Why लिए is he भाई, नहीं नहीं, ठीक है, going? एक सेकंड को हम मान लिए बीसीसीआई ने बोल दिया कि भाई आप ये करो, बट ये भी सोचो कि बंदा कर कहीं को नहीं रहा, ऐसी कुछ बात हुई होंगी उसके साथ which is not sitting well with him. Though I understand individually, Ishan Kishan should just calm down because उसका future at stake है यहाँ पे, not anyone else's. Number one, in the Indian team at least. नंबर टू, इट्स के भाई आप कर लो वो चीज, बाद में आप अपनी जस्टिफिकेशन दे दो अगर आप चाह रहे तो, यू नो, डू इट अंडर द रैप्स, डू इट बिहाइंड द सीन्स, बट बीसीसीआई के आगे नक्को कूद लो इतना, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू एंड अप लाइक। मगर क्यों कूद रहे हो? ये तो लाइक ओनली दे विल नो, राइट? यही तो एंड ही बात विल है। नेवर, बट उन्हें कभी बोलेंगे भी नहीं, उन्हें इंटरव्यू अगर दे हाँ, दिया तो तो खत्म हो जाएगा उन्हें। वो वही तो सो बोल रहा हूँ, कोई ही रीजन हैज, नहीं हो। सो मैं वही Look, तो I बोल रहा हूँ, wanted ही to हैज नो show चांस टू। this. Bro, मैं वही तो first, if you are sitting here and you are saying that he shouldn't do this, you think he doesn't know that? He knows that, bro. उसकी रोजी रोटी है, हमारी थोड़ी है वो। उसको मालूम है कि उन्हें नहीं कूदना चाहिए। The BCCI is big, respect करना। You think he doesn't know that? He knows that. Shreyas Iyer, you think he doesn't know that? They all know this. They know what is the consequences. They know everything. But the reason must be that big that they're doing this, right? There must be something that they're doing this. Why are they training with Hardik and Krunal? They never used to ditch NCA and stuff. They always used to go. There must have something must have happened that they're not telling us, and we don't या have that information. हाँ, we don't have that, but that's what I'm saying. For the betterment of his own thing, despite knowing all of that, the easier thing would be just go report and then see and just play one match. What I'm saying, for his So own that's sake. what I'm telling you. Why isn't he doing that? Because there must be a reason. We don't know. There must be a reason. नहीं, reason aside, देखो, reason aside बोल रहा हूँ, I'm just saying reason aside, when you know what you're up against and you might not be able to overcome that thing, the smarter thing is that भाई तू कर ले Maybe he तेरा has a whatever. plan B. Maybe he has something else. Maybe there is something that he has. Because I'll tell you, like what you're telling me now, what Tejas is saying, you think he doesn't know this, that he has to, like he shouldn't be, with Hardik Pandya, Krunal Pandya. You think Shreyas Iyer doesn't know that he shouldn't be doing that, like anybody else? There should be something. End of the day, this is all politics, and the institution should take responsibility and solve this behind closed doors. Because right now, you and Tejas and me are only told what you want to, what BCCI want you to know. You're not being told the mistakes they're making, because they बिल्कुल are. So that is why I am putting the opinion. देखो, I completely agree. ईशान किशन might be in the right, or he might be in the wrong. Either way, I just feel कि जब 6 महीने आपका consistent, मैं सब वाउच करता हूँ, मैं जिधर से देख रहा हूँ, जो चीज के अगेंस्ट आप हैं, लाइक अगर आपका ना एडिशनल वो आईपीएल दूसरे लीग्स में आप जाके खेल लेते हैं, आपको वो सब टिक से आप सेटिस्फाइड है, आई विल गो अप अगेंस्ट द बुल, वेरी गुड, यू डू व्हाट यू वांट टू डू, लाइक व्हाट यू डूइंग राइट नाउ for the betterment of Indian cricket and to be in and around it. Or maybe you want to take a stand and you're just saying, I want to set an example. Then you have to, What go if into what the if they got so pissed off at him for going to Dubai, and they told him, you do whatever you want, we're not going to pick you again? Maybe they told him that. That We is don't a know. possibility, but Yeah, again, that like, is, but what they're maybe coming and saying in a press conference, like Rahul Dravid and everything, they're नहीं, saying, उन्हें कुछ भी बोल सकता, जैसा आप बोले, उसमें क्या, उन्हें झूठ बोल दिया, उन्हें बोल रहा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डिसिप्लिन। अभी बोल रहे हैं कि उन्हें नहीं कर, जिम कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, तो है डिसिप्लिनरी इशू। द्राविड तो कुछ भी बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके सामने झूठ बोल रहा है, हम लोग सुन रहे भी वो, और बोल रहे हैं कि हाँ हाँ भाई, लाइक ही इज डिसिप्लिन नहीं है इशू, लाइक दिस दैट, दे विल टेल यू व्हाटएवर दे वांट फॉर यू टू हियर। But end of the day, I'm just saying that this should be solved by the two inside. This should not be for us to discuss and us to think, because they're giving us information only from their side. What about the players' side? And this is not going to be solved by me or you. We cannot do anything about it. If you call Ishan Kishan and tell him, भाई जाके माफी मांगो, उन्हें सुनेगा तुम्हारी बात या मेरी बात? नहीं करेगा। ट्राई करता हूँ ईशान का Okay, नाराज
You know what I'm sorry. trying to say. Yeah, Like yeah, it's 100%. work हाँ like हाँ. like ईशान का they नाराज have होना सही है. मुस्तफा भाई जब सीनियर खेल रहे थे तब बेंच पे बैठा था, और जब टीम बी में भी बेंच पे रहे थे तो मुस्तफा भाई बुरा. बिल्कुल, आई हैव बीन सेइंग दिस सिंस लाइक एवर. जब से शुरुआत हुई वेस्ट इंडीज से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, वर्ल्ड कप में 2 मैचेस से लेके, एशिया कप में पाकिस्तान But से that लेके. might not even be the problem. We don't even know if that is the problem. हाँ. मैं वही तो बोल रहा हूँ. और जो प्रॉब्लम है आप वहां सॉल्व कर दो. हमारे को ये नहीं मालूम कि भाई उन्हें नाराज था इसलिए चले गया मेंटल हेल्थ ब्रेक पे. हमारे को क्या मालूम है, हमको नहीं पता ये सब. Because Ishan Kishan has not come and told us what is the issue. So we don't know why he took that mental health break. Right? We don't know. That is what I'm trying to say. And the people who know, they should solve it behind closed doors and bring the players back and think. Because end of the day, what is happening? Indian cricket is getting infected. We're like you have two talented players. They're not for a small reason or whatever it is, even if it's a big reason, they're not being able to represent the country. And look, at the end of the day, what's going to happen is IPL is going to take over. Franchise cricket is going to take over. No, Yeah. सब light लेने वाला है ये सब फिर. It's anyway it's going to happen. इंडियन टीम के बेंच पे बैठने के लिए आज भी कितने लोग ट्राई कर रहे हैं. आज कभी मनु ईश्वरन ने प्लेयर लाइक हिम. बीसीसीआई announced new rule after a year refused to go play Ranji Trophy. BCCI said players are showing less interest in red ball cricket and only want to focus on white ball cricket. Now, if that is the scenario, based on what we have been saying throughout this show, then you have to understand Virat Kohli, Rohit Sharma fit this bill. They should not get special treatment, and they should also go for play for their respective Ranji Trophy matches. Say that. So you agree with me? Yeah, I mean, if that, I'm not saying I don't agree with you, but I'm just saying in Why a are you not context. agreeing with me? No, I'm just saying in a context where if you're looking at as a youngster, if I'm trying to be looking at Virat Kohli and telling him Rohit Sharma as a khelna, I would not agree with that because I know what they bring to this team and the experience. I'm just saying अगर वैसा है जो less interest है No, वो look, situation. there's two. Either you सबको खिलाओ या सबको नको खिलाओ. इट्स सिंपल. बिकॉज आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता. मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता. यू कांट लाइक गेट इनटू ऑल दैट. मनी वाइज दिस दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट मैटर. मगर गेटिंग इनटू इफ समवन But India में बहुत मुश्किल है वो चीज अपन जो बोले because of what we've seen in the past, right? Experience always plays a key factor. Ashwin is always bought like Undertaker in this team. Time and again we've seen in white ball format, we've seen in red ball format कि कहीं ना कहीं से ना अंडरटेकर बन के आ जाता. So मैं वो हिसाब से बोल रहा हूँ कि इंडियन वही क्रिकेट तो में बोल रहा it's हूँ. like But that. first that doesn't make it correct. It doesn't make it correct, but I would Exactly, that is my point. That I is would my understand point. अगर विराट कोहली and Rohit Sharma है टीम में despite of anything, it's because what they've done is what people will be मगर गलत justifying. तो है, राइट. और हाँ गलत प्रॉब्लम है. तो यही. एंड हाँ. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम्स विल रूट फ्रॉम. इट विल कम फ्रॉम दिस सिचुएशन कि भाई आप सबको अलग अलग वो दे रहे हैं, लाइक प्रेफरेंसेस एंड अलग वो. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम विल कम फ्रॉम. अगर आप सीधा सीधा बोल दिया भाई सबको ये खेलना है, तो विराट कोहली रहने दो, रोहित शर्मा रहने दो, सब करेंगे फिर. एवरीवन विल डू. Hardik never went to the NCA during his back injury. He was in the Mumbai Indian camp for long time. अच्छा एक बात तो इंडिया टीम में कंट्रोवर्सी द्रविड़ की वजह से क्यों होती है एवरी टाइम. रिमेंबर ग्रेग चैपल एरा, तब इंडियन कैप्टन भी राहुल द्रविड़ ही था. व्हेन ग्रेग चैपल को लाइट ले लिए थे नहीं, वो जो मसला हुआ था पूरा. अरे ऑलरेडी गंगुली और द्रविड़ गंगुली लड़ा को लड़ निकाल लिया देते था थे. ना. हाँ द्रविड़ ही आया था. हाँ. द कैप्टन. रोहित एंड विराट तो हमेशा टीम इंडिया में रहेंगे, सो चांसेस आर लेस. वैसे एट 40 तेंदुलकर ने भी खेला रणजी. यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई उसको अगर उन्हें ब्रेक पे गया, उन्हें नहीं क्रिकेट नहीं खेला एक महीने के लिए, ठीक है. पहले भी ये हो चुका है फेस. ऐसा नहीं है कि अभी की बात कर रहा हूँ. उन्हें लास्ट टाइम मेंटल हेल्थ ब्रेक विराट कोहली ने लिया था बिकॉज ही वाज इन बैड फॉर्म, राइट. यू रिमेंबर दिस? Yeah, 3 years ago. 2022, before the Asia Cup and that crazy Pakistan innings. Yes. He didn't play cricket. He didn't lift a bat, he said also in an interview for like 1 month. So वो time पे he came, walked in straight to the team, which is completely fine. I understand why that happened, everything. But then, but what is the end of the day? He's representing India, so is Ishan Kishan and stuff. अब आप senior junior में जाएंगे तो फिर junior भी प्रॉब्लम तो आ जाएगा. It will come. इंडिया में हमेशा यही रहेगा भाई जी. सीनियर जूनियर का ही मसला रहेगा. नंबर 2 देखो, द प्रॉब्लम व्हाई दिस प्लेयर आर हैविंग नाउ is that Virat bhai, I am assuming, I'm not again, I don't have any source, this is what my brain is telling me, is that विराट भाई जब करे उनको ऐसा करे, हम जब करे एकदम रूल्स डाले रहे, रांची करो, ये करो, वो करो. ये हो सकता है. बिल्कुल तो, यही तो है. मैं यही तो बोल रहा हूँ 1 घंटे से. यही तो है. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. Exactly, of course, this is where the problems are coming. I understand everything. The player is wrong. मेरे को यही है कि भाई आप वो पेडेस्टल से देख नहीं सकते.
right? And that's the issue. This is how Indian cricket has always been, and you have to accept that harsh reality if you want to continue to play in and around this thing. Or Indian cricket can change and improve also. They can be say improve because look, you're not winning anything. You're not like being the most successful or anything. You're not doing anything great by keeping these rules. आप क्या जीते भाई पिछले 10 साल में? फिर भी आपको जिताने वाले कौन थे जो भी खरीद लाए whatever it is always विराट कोहली रोहित शर्मा and all but just people like these guys, right? So you can't क्या है अब आप 2024 वर्ल्ड कप ही ले लो लाइक आप विराट कोहली रोहित शर्मा के बिना आप जाएंगे बट नॉट एवरी विराट कोहली रोहित शर्मा होना जरूरी है लाइक वो जो नाम है इट्स बिगर देन दिस टीम unfortunately for some. But that is a different conversation. I'm saying that no in gen I know I'm just looking at the fact that if you're an organization, right, if something has gone wrong, if someone is doing something bad, it is your responsibility to solve that problem and you do it behind closed doors instead of telling Faiz कि भाई ईशान किशन ऐसा कर दिया पार्टी को चले गया और telling X news channel ऐसा हो गया भाई इन्हें ऐसा कर दिया इन्हें ये पार्टी को चले गया इन्हें ये इसका वो ऐसा ऐसा नहीं चलता यार परसों सिराज जो फिर रहा था होरी के साथ कुछ ना सिराज भाई को तो सिराज तो सेकंड में बोल के गया था अपेरेंटली सो इट्स फाइन तो ईशान कौन सा नहीं बोल के गया उन्हें भी बोल के गया बट ईशान आई डोंट नो ईशान वापसी का रास्ता प्रॉब्लम ईशान का आई डोंट थिंक जाने का भी तो वापसी आने का प्रॉब्लम ईशान किशन जो है उन्हें बोला मैं मेंटल हेल्थ ब्रेक पे जा रहा हूं ही वेंट इन पार्टी इन दुबई सिराज आल्सो सेड ही इज गोइंग ऑन अ ब्रेक ही आल्सो वेंट इन पार्टी दोनों सेम पार्टी तो दोनों करे भाई अभी नाउ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग व्हाट यू आर गेटिंग फेड इज दैट द प्लेयर इज रॉन्ग दिस गाय इज रॉन्ग वी आर राइट बट वी बोथ नो दैट डजंट वर्क लाइक दैट अच्छा एक बात बताओ अगर पटिडर और सरफराज थर्ड टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं फिर फोर्थ टेस्ट में राहुल को खिलाना चाहिए अगर हाँ तो व्हाई ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन अगर पटिडर और राहुल सरफराज अच्छा खेले देन आई थिंक दे शुड गेट लंबा देना चाहिए उनको रस्सी बिकॉज राहुल इंजर्ड है और अगेन अगर इंजरी फिर सबसाइड नहीं हुई तो या व्हाई नॉट प्ले राहुल बट आई डोंट थिंक राहुल विल गेट he shouldn't get a direct entry if they perform well because like string तो देना चाहिए Do you think Rahul will walk in if he comes back in the fourth test? It depends on how the batting is structured out. I don't know. Look, Rahul is a type of player he can play anywhere. So one guy misses out, he can replace that. He can open. He can go wicket keeping. We don't know who's going to be injured or who's going to be fit in the next game. So like Rahul is a type of player. He doesn't necessarily need to take these two kids' place. He can take anybody's place. He's like he can fit in anywhere. Maybe he plays instead of Bharat. Yeah, that's what I was like. Wicketkeeper Rahul play fourth test. Looking at his current form is good, but it's just like I wouldn't say to aggravate his injury unnecessarily. अगर नहीं है पूरा 100% injury खिला भी मत बिल्कुल. It keeps coming back to bite him. But yeah, I mean ईशान किशन ये सब चलते रहेगा लेकिन yes, there are concerns in that batting lineup. Inexperience है रोहित शर्मा definitely टेंशन में तो होगा रोहित शर्मा के भाई क्या हो गया एकदम टीम को सबके मसले हो जा रहे हैं हैमस्ट्रिंग पकड़ ले रहा उन्हें क्वार्टर से पकड़ ले रहा उन्हें बैक पकड़ के उन्हें अब रणजी नहीं खेल रहा लाइक रोहित शर्मा लूजिंग हिज शिट प्रोबब्ली Yeah, like he's probably थोड़ा सा stress रहेगा, but they've been in this position before. They've had a lot of injuries before, and they've won series. So I think still have to be confident. They have their bowling lineup there, and it gives a chance. ये जो perform कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी में 2-3 साल से लगातार इतने रन्स मार रहे हैं, सबको चांस मिल रहा है अब. जो आप you've been rewarded for your performance. Now go out there and play. Like it's not like you're not capable. You're playing in Indian conditions only. आप जाके ऐसा नहीं है कि एकदम से swing bowling खेल रहे. But there is thoda sa cause for concern ki like ekdam se we still don't have a proper replacement for Pujara, Rahane and everything. Hopefully these guys step out and do it. It's going to be it'll be difficult, but I don't think it's impossible. आप perform कर सकते हैं because conditions तो वही है जो आप रणजी ट्रॉफी में खेलते थोड़ा फर्क होगा इधर उधर, but you're playing in Indian conditions, so I think hopefully they can handle it. Yeah, 100% they should. Hopefully they will handle it, but for even the changes that England have, Ollie Robinson, Dan Lorella, अच्छा खासा like Ollie Robinson will be a threat. I think he'll be able to move the ball and stuff like that. And if he provides an impact, it'll be good for England. And the spinners have done decently well. Tom Hartley, अच्छा करा debut series में अभी तक. He's been a very good impact player for them. Yeah. But yeah, in some countries, even the seniors have to play some sort of cricket to prove their match fitness. If they come off an injury break, doesn't matter if it's second 11 or club match as long as they play.
Fair enough. Like, I mean, that's the thing. It just if you, it makes it less complicated if you apply the rule to your 15 players who represent India. If the goal is one, right? You're representing India. You want to win for India. Yeah, So it won't even take that much time. भाई एक दिन भी खेल ले तो बस it's just yeah, reporting on like that I pitch don't and think saying. it's that big of a deal. Otherwise, you don't keep that rule for Indian players. You say that no, it's okay. You don't need to. आप like The only biggest problem in this whole thing now I feel is IPL. Like IPL has messed up the whole structure, and the people picking up yeah, players अब from चल there के in the तुम क्या white होने ball वाले format, and अच्छा then white ball format has been translated into a red ball format spot, and that is what the problem is. So I have a question for you now. ये yo-yo tests होते right? Beep Now test maybe. तो ये रोहित शर्मा विराट कोहली उन लोग को माफ करते क्या है ये yo-yo test? No, apparently they take it from time to time when they come to the NC. That's what I read. Where I read this very recently that Rohit Sharma and Virat Kohli they take a lot of people yo-yo test. तो फिर simple है. If they're like that's what I'm saying. It should be applied to everybody. According to me, it is a blessing in disguise that we have specialist red ball batsmen and middle order. Yeah, it could be blessing in disguise. You never know. तो इस हिसाब से अगर चलो मान लो रजत पाटीदार पूरी सीरीज में अच्छा करता है एंड राहुल भी अच्छा करता है तो क्या नेक्स्ट सीरीज में कोहली जब आएगा तो किसको बाहर करना चाहिए राहुल और पाटीदार व्हाई भाई व्हाई आज शायद शुभमन गिल को बाहर कर दे. आपको नहीं पता क्या हो सकता है जब तक वो इफ्स एंड बट्स में अगर आप जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. एंड अभी Like तो कोई टेस्ट है भी नहीं भाई अभी लाइक टिल दिसंबर इज नो टेस्ट सीरीज पहले आईपीएल because है फिर हमको क्या टी20 पता है था कि श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, जडेजा इन लोग सब नहीं रहेंगे प्रेजेंट. विराट कोहली, या आई हैड नो क्लू. या दे टेक योर टेस्ट आई सॉ द टेस्ट एज वेल आई थिंक So they don't get exception, right? Because they're नहीं seniority नहीं thing. नहीं नो नो वो फिटनेस पे तो दिख के आ जाता है अगर ना That's I would say that is harder than playing a Ranchi match. Yeah, yo-yo test is very hard. Virat Kohli got into trouble because he tweeted his yo-yo test score करते हैं. Yeah, I remember 17 or something, right? Point 1, point 2 or something like that. तो वही मैं कह रहा हूँ पूरा टाइप नहीं कर शैम्बा के समथिंग इज सेइंग कि भाई इफ इन एन इवेंट कोहली आएगा तो जब किसकी बाहर करना चाहिए राहुल वो सवाल का जवाब अभी तो नहीं दे सकते इमीडिएटली बिकॉज अभी तो सीरीज नहीं है बट इन अ केस अगर दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं अगेन फिर हालात कंडीशन ये वो मद्देनजर रखते हुए एंड कौन अच्छा खेल रहा कौन बुरा नहीं खेल रहा सीरीज कितनी बड़ी है लॉट्स ऑफ थिंग्स विल टेकन इनटू कंसीडरेशन Yeah, बट and आई with मीन NBA form and stuff keeps changing, conditions change, opposition changes. So you don't know what type of form you're in, who's going to play how. That is also another key thing, right? Last year, Faz Shubman Gill was undroppable in या any या format. अभी तो T20 से तो निकाल ही दिए थे उसको लास्ट सीरीज में. उन्हें खेल रहा तो नहीं था, राइट? It was यशस्वी and रोहित या शर्मा. या And उसके बाद टेस्ट में भी उसका spot if he didn't score that 100 was in trouble. So like you don't know what's going to happen next year or next series. अभी तो after this series it's all T20 till like June so no one is going to focus on anything else except T20 and maybe that's where we have to just keep our focus till then अभी तो दो टेस्ट है तीन टेस्ट बाकी है test is setting out to be good England probably would be a little happier after these changes that they're seeing maybe they're looking at a possibility to actually win this series Yeah, 100%. like This is the best opportunity for them to win the series. Best opportunity. They'll be very disappointed if they don't win. yeah I don't even think draw. Like they'll go for the because no Virat Kohli, like no KL KL Rahul, Rahul Shreyas Justin Iyer Bumrah. We don't know how many if he's going to play every single game. Jadeja also we're not sure. This is the best time, and despite all that, England is actually playing good cricket. Like they're playing good cricket. They've challenged India so far. उन लोग अच्छा performances there bat or ball ke saath, and they've done well whatever they had despite whatever is in the opposition. Just their own gameplay has been good, so I'm sure they'll want to win this series. But I would agree with Tejas bhai. I would still back India. I still feel that these guys who have played well in Ranji Trophy, this is the time to shine. I know there will be pressure, but khul ke khelo, it's okay. Whatever happens. I don't think they need to play with any pressure because think of it this way, भाई मैं एक दो गेम के लिए हूँ उसके बाद कोहली आ जाएगा वो जाएगा. If I am them, who cares? I'm not. What I don't need to. I know that Virat Kohli will take my spot. I'm gonna play khulke. That maybe opens a different kind of thing, and then he goes and bangs 100. You don't know, right? So just play open mindset and natural game. Yeah, it's gonna be a good series. Hopefully, काफी लंबा ब्रेक हो गया. दो दिन बाकी है. After आज तो 13 मीन्स 2 और दिन है. उसके बाद Match you कब है? return to fitness. 15 को. Yeah, 15th. Thursday. Ooh, we're getting Thursday. close. आज Yeah. ट्रेनिंग भी हुई थी, right? आज प्रैक्टिस हुई थी शायद I राजकोट में. think I'm not sure. Yeah.
इंग्लैंड तो आ गए वापस राजकोट को आज. They're back Yeah, in Rajkot. England are ready. Uh, it should be interesting, man. I say New Zealand second test in 2 hours time. Yeah, I mean that is बेचारों बच्चों को मार मार के गिरा दे रहे हैं. But He अभी said, ऐसे. no, the South African coach, it's like Burnley going to Anfield every day. Like it Yeah. feels like that right now. Like that's what it feels like. Yeah, Uh, but it's good experience for them, I think. And yeah, कल तो Champions League भी शुरू है, so it's gonna be like अभी शुरू होगा match. It's gonna be longer nights. But yeah, I think that pretty much wraps it up. Padikkal does get a call up because eventually. Nepal smashed Canada, man, today. Yeah, तुम्हारा ठक्कर ठक्कर हार गया बेचारा. मेरा नहीं है पंटर का है पंटर ड्रॉप इज कैच सेमीफाइनल्स हर्ष Yeah, ठक्कर मगर उन्हें उन्हें भी 7 दिन सफर आई he was in Chris Gale's team as well. He's also playing in that tournament. Nikhil Datta, he's also playing a few players. But Nepal जो है भाई they're playing very good cricket, especially at home. yeah. And it's good. बहुत passionate लोग हैं वहाँ पे. Yeah, even the Asia Cup also, they were pretty good to watch. I mean, exciting team थी. They created क्या बोलते लाहौर में भी जब पाकिस्तान से खेले एकदम से 2-3 विकेट ले लिए थे. It was good environment. फैन से आपका इंटरेक्शन हुआ था. किधर? नेपाल एशिया कप में श्रीलंका में जब आप. Yeah, नेपाल में they पागल था were. crazy. Yeah. What are your thoughts on Rock turning heel and Jono Rogan against Bloodline and now WrestleMania main event is Roman? I think they played to the sentiment of the audience because everyone was saying they screwed Cody Rhodes and they just twisted the script. I would have rather seen Rock versus Roman Reigns, but I understand Cody Rhodes this and that. They played to the audience. I think that's what they normally do. He slapped him, bro, in the press conference. Rock slapped the Cody Rhodes. Now he's the bad guy again. तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस नहीं देना चाह रही कि सिर्फ 2 या 4 को छोड़ दो, जब चाहे किसी को बाहर कर देते हैं, जब जिसकी वजह से क्रूशियल मैचेस में प्लेयर फ्लॉप हो जाता है. मगर आप करेंगे क्या रेड? ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है. अगर आप देखो विराट कोहली, अब मेरे को ये बात बताओ, विल दिस बी फेयर ऑन द प्लेयर? नाउ आई हैव स्कोर्ड 100, ठीक है, मैं 100 मार दिया इंग्लैंड के अगेंस्ट, सेकंड टेस्ट में, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट में मार दिया, मेरे को नेक्स्ट में ले लिए, विराट कोहली को बेंच कर दिया, ठीक है. अब मैं पहले मैच में नहीं परफॉर्म करा, दूसरे में नहीं परफॉर्म करा. Now what is my state of mind? Virat Kohli is waiting for me, like I'm taking this guy's place, he's sitting on the bench for me. ये तो बहुत confusing situation हुआ था. Like that's why like sometimes it's not easy to be an Indian selector या Indian coach, Indian captain 100%, but वही है कि आप एक baseline follow करो, एक guideline ऐसा लेके चलो कि भाई आप at least it's easier for you to twist it. Even if you're trying to twist it, it's a little easier कि आप ये ना को करो कि एकदम से आप 6 महीने किसी को लेके जा रहे, फिर उसको ऐसा बाहर कर दे रहे, या कोई मैन ऑफ द सीरीज बन के उसको लाइक कुलदीप के साथ करे थे दिसंबर में, जब बांग्लादेश के अगेंस्ट मैन ऑफ द सीरीज था, इमीडिएटली नेक्स्ट टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में बिठा दिए थे उसको. सो इट्स जस्ट अनरीजनेबल. बिठाए तो ऐसा लगना कि हाँ भाई कुछ दिमाग से बिठाए, ऐसा नहीं कि भाई यार एकदम से बस ego clash में या दोस्ती यारी में. I think you're correct that it's with the competition, population, everything, it's extremely confusing and difficult, right? Yeah, that is why we 100%. have such various opinions, this, that, because we don't know what the right answer is, because there's too much to handle, and that's where things complicate and you get politics and you get issues. बहुत चीजें रहते हैं. Rohit and yeah, I saw that ad, it was insane. दोनों एकदम. Adidas apparently are going to make a logo, like the Jordan one for Jude Bellingham. Yeah, like this. Yeah. Oh my God. वो लेवल पे नहीं है यार अभी जॉर्डन के लिए. What? जूड बेलिंगम वो लेवल पे नहीं है यार अभी जॉर्डन के लेवल पे. लाइक जॉर्डन जो था, खैर Nike and Adidas, two different franchises. How was the AFCON final? Oh भाई माहौल था AFCON final तो. It was crazy. 2-1 Ivory Coast. What a game, man! It was incredible. The like fascinating atmosphere, बेहतरीन था. Match जबरदस्त था. 1-0 down Ivory 2-1. Coast, and then the guy who scored, Sebastian Haller, Yeah. he recovered from cancer. He had cancer like a couple of years ago. He used to play for West Ham, and what a finish, man! Side of his foot. Oh, it was crazy. And then everyone went wild.
मेरे को ये समझ में मतलब आया वो कौन था चिचा जो ट्रॉफी लाइक दे रहा नहीं था प्लेयरों को, उसको ही दे रहे थे. आई डोंट नो हु द हेल वाज दैट गाय ब्रो, आई डोंट नो. There is the king of that country or there is yeah, maybe the Ivory Coast का billion president. lakhs of views, like the captain को इतना like उससे ट्रॉफी छीन ले रहे थे, वो कर रहे थे, and then everyone कूद के like, I don't know He who was was. like he was like Salt Bay in the World Cup final 2022. Salt Bay was stealing the trophy from every Argentinian player. उसको बैन कर दिए from entering stadiums now. But that was not his fault. उसको इजाजत कौन No, दी? exactly वही तो है, उन्हें घुस गया. उससे अलावा उन्हें जाके किसका बच्चा था यार, डीपॉल का था कि नहीं मगर उन्हें घुसा कैसा, वही कोई तो इजाजत दी है. उनको? जाके उन्हें हाथा मिला ले रहा पागल लौंडपने कर रहा. And he, I mean, that's where they just said खलास, this guy can't come in. Yeah, that's so weird, man. I don't know. काश हम लोग को भी एक्सेस दे देते हैं ऐसा. वर्ल्ड कप फाइनल जीतना था पहले अपन. ऑस्ट्रेलिया में यूं ही. What does that mean? यूं ही का ट्रेलर नहीं कूल का. नहीं, थर्ड रेडपुल आई डिडंट सी इट. फर्स्ट भी नहीं देखा मैं तो, एक भी नहीं देखा रेडपुल एक्चुअली. मैं पहला देखा, शायद मूवी देखा था डेडपुल. बट देखना पड़ेगा आगे आगे क्या खबर आती. श्रेयस से रिटर्न होते नहीं होते, ईशान किशन फाइनली कुछ करते नहीं करते. सबसे खुश अभी हार्दिक पांड्या बिकॉज उसको इंजरी का बहाना है. एंड उनकी भी वापसी कभी होंगी इंडियन टीम में अभी नहीं पता. विल ही बी देयर फॉर द 2024 वर्ल्ड कप आल्सो नहीं पता. टीम्स का तभी अनाउंसमेंट हो जाएगा. What happened to his injury? He's still injured. Every day he's putting some gym photos. I don't know man what he's up to. Yeah, No that idea. guy's. Yeah, again, he's not managed properly. He either. he might not even have been healed and he'll come back. That's what the problem is. This guy himself, internally you're not feeling well, but you still like just play. वैसा सीन है इसका. Yeah, and the thing is, also he's not managed properly either. Like उसको like properly like guidance नहीं मिलता. Like he would have been a very good all rounder for us in like overseas test matches. You remember he picked up a fifer in England. In 2018 in that series, I think it was the game we won. I don't know if it was Nottingham where he picked up a fifer. Like not been managed well, and he's also done stupid things like these guys. Like it's not worked out. क्या है कि या तो इन्हें नई पलटन बना ले रहा, नई फौज बना ले रहा, नई उम्मीद, नई इंडिया, समथिंग. मुंबई इंडियंस का तो मैं again it's just matter of अब उसकी लगने वाली है, but it's not like totally his fault, even though like I would love to blame him, but it's not his fault. Like no, I mean he just got an opportunity, he took it, but people will not understand that, right? And obviously the franchise का जो गुस्सा है वो franchise पे नहीं निकलेगा, उस पे निकलेगा, because franchise उसके वजह से वो खत्म होता है, which is unfair on him, but that's how people will look at it. He's now Mumbai का राजा, but they're not going to really, they're not gonna like it, right? And if Rohit Sharma leaves, then खत्म हो जाता उसका wins. तभी तो मजा है. देखेंगे क्या होता, बट अभी 2 दिन है थर्सडे तक. वी हैव टू वेट फॉर द. आपके लिए सवाल है, आपको जाने नहीं दे रहे. क्या बोल रहे बीसीसीआई ज्यादा बड़ा है या आईपीएल फ्रेंचाइज ने एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई. मेरे हिसाब से तो बीसीसीआई रहना चाहिए, बट जिस तरीके से आप आईपीएल की कंट्रीब्यूशन देखो टू इंडियन क्रिकेट एंड द प्लेयर्स दैट हैव कम, इट लुक्स लाइक आईपीएल इज मोर पावरफुल. एंड 2000 एंड आपके हिसाब से लास्ट ईयर मेरे हिसाब से तो बीसीसीआई रहेगा ना. बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया है. Who is right currently, now? yeah, currently it looks like an IPL franchise owner. Like अंबानी को overrule करना मुश्किल है. आप कुछ भी कर लो, उखाड़ लो. रोहित शर्मा had to play the whole entire IPL right just before a World Cup. Straight up, exactly. यही तो जवाब, like जो भी आपका जवाब था यही तो पूछ रहे थे. Like basically in a natural condition it should be BCCI, but unfortunately आज के हिसाब से it's IPL. and problem ये है कि IPL में तो पैसे मिलते हैं. आईपीएल में इतने पैसे मिलते, इतने आपको जश्न करने का मौका मिलता. 2 महीने के कोई फायदा है इसका. एग्जैक्टली. और वहीं से तो प्लेयर उठा रहे व्हाइट बॉल के, फिर व्हाइट बॉल का जो फॉर्म है आपका ट्रांसलेट होके रेड बॉल में आ रहा है. एग्जांपल सूर्या कुमार यादव. ब्रॉडकास्टिंग ये सब कौन, बीसीसीआई इज गेटिंग द मनी राइट फॉर द आईपीएल एंड एवरीथिंग. Yeah, that's what it is. And they're setting it according to Indian times everywhere in the world, because people from India will tune in to watch World Cup. ले लो कुछ भी ले लो, क्या बोलते हैं IL-T20 ले लो, कुछ भी ले लो भाई. Everything is in the direction of BCCI because of all the franchises of the IPL right now own a team in different countries of the world. West Indies, Australia, PSL, IL-T20,
100 में भी अब थोड़े दिन में देख लो आप 100 के भी टीम आ जाते, कहीं ना कहीं से इंडिया के आईपीएल फ्रेंचाइजी का पावर उतना बढ़ जा रहा। Yeah, 100. That's where cricket is going, अभी franchise. टी10 लीग आ जाने दो, फिर आप देख लो कितना फर्क हो जाएगा। टी10 की अलग लीग है, वो टी10 से फिर टी20 की टीम बनेगी। जस्ट गोना बी लाइक दैट। 100%. Who do you think will replace Daryl Mitchell in the second test? Will Young or Neil Wagner and Santner back to bat at number 7? Darren Mitchell, baby. I don't Will know. Honestly, Young. ये टेस्ट को तो मैं like I've only watched because of Williamson and Sachin Ravindra. So I really Will मैं Young सच will, Will it Young will won't make replace. it won't make a difference, bro. Like बेचारे इतने मासूम, it's like शेर के मुंह में आप बच्चों को ढकेल दे रहे, you know, it's just like sad. But yeah, it's going to be fun. It's I think North K also will be back. परसों बात कर रहा था ने तो full fledged under 19 World Cup final में, right? He was there with the in the commentary and he was talking to Mafak also. It was good to see थोड़ा और mentoring कर रहा था उन्हें. So yeah, Yeah. hopefully he's back. It's been a long break for him right now. I think 6 साल हो गया होंगे, 1 महीना 6 महीने या 1 साल हो गया होंगे उसको खेल के। आईपीएल नहीं खेला लास्ट ईयर, राइट? He didn't play? I think he got ruled out in the half or something. Maybe I'm not sure. Hmm. पर या He was retired. तो फिर बीसीसीआई को इतना तो पावर दिखा सकते हैं, जैसे आईपीएल के लिए चोट के बहाने देकर कुछ प्लेयर रांची में खेल रहे तो उनका फ्यूचर इंडियन टीम में सेलेक्ट ना करें। इतना तो दिखा सकते हैं कि जैसे आईपीएल के लिए या बट वो रिप्रेमेंट हो ही नहीं सकते ना। प्रॉब्लम वही है ना शेन भाई, कि अगर अब बेसिकली उन्होंने क्या बोले मुसावा, लाइक इफ पीपल आर गेटिंग इंजरी, जबकि उन प्ले लाइक पीपल आर इंजरिंग देमसेल्फ बिफोर द आईपीएल जस्ट टू डीम फिट फॉर द आईपीएल, यू नो व्हाट आई मीन, दे आर गिविंग प्रेफरेंस, लाइक ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, दे आर नॉट प्लेइंग इंटरनेशनल but they're playing IPL, like they're giving more preference to IPL over international cricket, and that's why doesn't BCCI show some kind of reprimand or something them, like But bhai they're you, benefiting from it. yeah, because वही है ना उनके and India कुछ पता नहीं, but why aren't they अगर stopping that? अगर हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर अगर आईपीएल नहीं खेले, अपने फ्रेंचाइजीज को रिप्रेजेंट नहीं करे, तो बीसीसीआई का ही नुकसान है। अभी उन लोग बता दे रहे हैं ऐसा कि भाई रांची खेलो, वो खेलो, ये खेलो। आप मेरे को बताओ, कुछ भी करने दो बंदा, अगर उसको आप आईपीएल से मना कर दिया, फॉरगेट अबाउट ओनर्स एंड दिस एंड दैट, आपका ही व्यूअरशिप ये वो नीचे जाएगा और प्रॉब्लम आपको ही होगा। लाइक यू नो, लाइक सो दे आर नॉट, जहां पे भी पैसा है आपको, वहां पे हम लोग नहीं लेंगे डिसीजन। दैट इज द प्रॉब्लम इन माय एग्जैक्टली वो ओपिनियन। नहीं सही है, बिकॉज देखो भाई, अगर आप कितनों को निकालोगे वो बेसिस पे, यू नो, आप अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब लोग कल को बोलते हैं हम आईपीएल खेलना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली इट कुड कम लाइक दैट। फर्स्ट प्रायोरिटी इंडियन सपोजिटली रहेगा, बट जब पैसा आपको मिल रहा 10 ओवर के लिए, आपको 4 ओवर के लिए अगर 20, 25, 30 लाख रुपए दे रहे पर गेम, आप नहीं लोगे, कोई भी लेगा भाई। सो इट्स लाइक दैट, And look, इट्स रॉन्ग। आप ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी ले रहे शायद इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर है, पैट कमिंस, ये लोग, दे डिड नॉट प्ले आईपीएल बिकॉज़ दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द डब्ल्यूटीसी फाइनल। यस देयर आर प्लेयर्स लाइक दैट आल्सो, बट ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटिंग व्यूअरशिप है उनके हद तक अच्छी है, डिसेंट है, बट अब इंडिया को आप आते, व्हाई डू यू थिंक अब नाउ पैट कमिंस इज प्लेइंग आईपीएल गेटिंग 20 करोड़, जो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है 16 करोड़ रुपए का है, ही इज गेटिंग हिज होल कॉन्ट्रैक्ट प्लस पर करोड़। and that's why I don't think it is wrong. अब like for example, अगर मेरा personal situation, अगर कुछ situation है where I'm getting benefit of playing IPL, then I'll go for it. मुस्तफा भाई, इतने बड़े भी प्लेयर नहीं है कि व्यूअर भाई, आप सिंपल ले लो, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप के बाद सीरीज से कितने लोग देखे, या नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग दैट सीरीज, राइट? या जब 2020 का जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था, रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं थे, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं होते तो कितना व्यूअरशिप गिर जाता इंडिया का, देख लो। नहीं भाई देखो, आप अगर केकेआर में कौन है कप्तान, श्रेयस अय्यर है, इम्पैक्ट तो होता। खाली आप व्यूअरशिप नहीं, आप फ्रेंचाइज का भी देख लो, आप टिकट सेल्स का भी देख लो, वो भी देख लो, स्पॉन्सरशिप का भी देख लो। There's a lot of these guys are tied up with sponsors as well. If Shreyas Iyer doesn't end up and do a sponsorship thing because he's injured, then it's a पूरा नुकसान है टीम को भी, उसको भी। So there's a lot of things involved. It's just not viewership. There's a lot of things involved. And आप बोल रहे हो उतने बड़े प्लेयर नहीं है, मगर आपको नहीं पता भाई, यहाँ पे सबसे छोटा प्लेयर भी बहुत बड़ा है इंडिया में। इंडिया में बहुत क्रेज है। I mean, मेरे को भी नहीं पता था ये बात। मैं जब इंडिया गया, मैं जब नोटिस करा, आप ये सब छोड़ो, आप लाइक इवन यू नो, लेट्स से हु इज नॉट इन द इंडियन टीम राइट नाउ, संजू, रिंकू सिंह is not in the team, right?
और in this संजू team. संजू भी ले लो, रिंकू संजू जो भी ले लो, उनका कैसा है भाई? अगर उन्हें नहीं खेलता रिंकू सिंह, उसमें बहुत फर्क पड़ता केकेआर में। अगर संजू नहीं खेलता राजस्थान में बहुत फर्क पड़ता। वी थिंक दे नॉट बिग प्लेयर्स दिस एंड दैट, बट इन इंडिया दे ह्यूज मैन। Yeah, 100%. I'm not, and I don't agree with the fact कि ऐसा होना चाहिए, but unfortunately situation ऐसा बना लिया है कि आईपीएल को, हालांकि अब सो क्या आईपीएल कहीं ना कहीं चाम लूज कर लिया आईपीएल अपना इन द लास्ट ईयर। एस्टर ईयर के अगर आप आईपीएल उठा के देख लो 2008 9 10, उसका आईपीएल का लेवल बहुत अलग था, बट अब थोड़ा बैठ गया, बट फिर भी इट्स रनिंग ओनली बिकॉज ऑफ स्टार्स, ओनली बिकॉज ऑफ स्टार्स यार। पहला आईपीएल वाज न्यू, इट वाज फ्रेश। आफ्टर 2015 थोड़ा बहुत उसकी चाम गई, but it's still surviving because of these big players. इसका मतलब जब डीके केकेआर का कैप्टन था तो केकेआर मैचेस की व्यूअरशिप तो आ ही नहीं होगी। आई मीन मे बी नॉट, बट गौतम गंभीर अगर जब थे कैप्टन, आप देख लो कितना था, यूसुफ पठान, आंद्रे रसल, ये प्लेयरों के वजह से आप अगर वो मैच देखोगे भी, तो अगर कौन खेल रहा देखोगे ना, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल बी लाइक इट्स लाइक सेइंग कि आप इतनी लॉयल्टी नहीं है यार इंडिया में इन कम्स ऑफ फ्रैंचाइज जैसा इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सनराइजर्स को ही ले लो, विराट कोहली जब यहाँ खेलता पूरे लोग बैंगलोर को सपोर्ट करते बिकॉज ऑफ वन प्लेयर। एमएल धोनी का तो मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, शेन भाई आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि एमएल धोनी जब खेलता चेन्नई के लिए, पीपल विल फ्लिप फॉर हिम। सो इट इज अ स्टार ओरिएंटेड गेम। एंड अभी तो धोनी जब खाली वर्ल्ड कप के लिए बोल दिया था कि भाई कुछ भी मत बोलो, ऐड कितना मुश्किल हो गया था, अगर जीत रहे हैं भी तो मत बोलो, कुछ भी है तो मत बोलो। ओरियो का एक ऐड था। It's what level they have, right? Like it's a player. I'm not saying the player is bigger than the board of the IPL franchise, bigger than the BCCI, but it's just how people in India they look at it, the game like that, based on certain players that they like. Yeah. Now Star Sports might make an ad with Iyer Shubman. as captain Iyer, Shubman and thing. Maybe they have a concept where it's young captains versus the senior captains. They have some concept, right? And then the broadcaster pitches that whatever they have that thing, and then एकदम से उन्हें नहीं खेल रहा, तो फिर टू अ पॉइंट जहाँ पे शुभमन गिल 800 रन जब मारा था गुजरात के लिए, उसको गालियां देना शुरू कर देते थे क्योंकि विराट कोहली को नॉकआउट कर दिया था प्लेऑफ्स में। वो तो है, लाइक आई मीन यू नो जो पॉइंट बोल रहे हैं, लाइक इट्स नॉट जस्ट व्यूअरशिप, इट्स आल्सो लाइक कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉन्सर्स, दिस दैट, वेयर बीसीसीआई को फायदा हो रहा, लाइक उनके जो प्लेयर खेलते या नहीं खेलते उनको फायदा हो रहा है आईपीएल से। बिकॉज़ एक्सपोजर बाहर तो हो रहा नहीं ना, बिकॉज़ दे आर नॉट अलाउड टू प्ले आउटसाइड लीग्स। The minute that you guys are allowed to play outside leagues, the game changes. Then IPL loses its credibility. Yeah, I agree with that. But you want to call it a night? I mean, it's already morning here, so yeah. No, I mean, वही है कि it's just how your KKR की team popular because of SRK only. Yes, SRK is a huge part of it, but also like players like Jack Scalise, Gautam Gambhir, first season Shoaib Akhtar, ये लोग भी तो थे KKR में, आप जब देखते थे, right? And KKR won 2 titles back to back. Now Gautam Gambhir being back will also going to be a very big impact. You'll see a lot of more viewership because of Gautam Gambhir coming back into the squad as a mentor, right? वो भी एक चीज है, like you can't neglect that fact. आप देखो सनराइजर्स में फॉर एग्जांपल कोई इंडियन उतना वो नहीं है, मगर फैज एंड मी वर सो एक्साइटेड टू वॉच उमरान मलिक. वी वेंट टू द ग्राउंड, वी सॉ हिम, एंड नॉट जस्ट अस, देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल, दे वांटेड टू गो सी हिम एंड प्ले एंड एवरीथिंग. तो लाइक you know, for maybe you like the third person, Umran Malik is not a big deal, right? But for us, he's the big deal. So you don't know whose favorite player is who and which player can impact fan or which viewership gang. We don't know that. Right अब ट्रैविस हेड आ रहा है. अब ट्रैविस हेड कितनी पब्लिक लाएंगे हैदराबाद से, आप देख लो कितनी पब्लिक अब हैदराबाद को देखने आएंगे. I don't know, like हम तो देखना चाहेंगे उसको, मगर अब I don't know कौन देखना. I'm just saying, like Travis Head वर्ल्ड कप विनर, फिनिशर, he finished off, ये वो अब थोड़ा वो नेम ले लेके आते हैं ना, तो वैसा भी रहता. But yeah, I mean, it shouldn't be the fact कि भाई BCCI के players should play above IPL, like put up IPL above, but sad reality यही है कि भाई they get much more attention to detail in the वही है franchise. भाई, अगर आप लाइक आपको वहां से आपका पूरा लाइक अगर काम हो रहा तो फिर ठीक है, आप क्या कर सकते हैं. यू नो there's players who have taken an IPL contract. Who's the South African player, man? I forgot. जो पहले साल में उस कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके बाद दिखा ही नहीं उन्हें. He bought a property and everything is chilling. I don't think he didn't play cricket after. I forgot. It was not Rashid Theron, but some player, man. But like मैं वही बोल रहा हूँ कि मे बी किसी का पर्सनल रहता, लाइक ठीक है, मेरे को लाइक यू नो फाइनेंशियल मेरे ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते पास, यू नो व्हाटएवर दे लाइक यू नो
you might have the situation where you need this money for a certain thing. So I'm going to Hmm. play IPL. I'm going to give it priority. It's okay. Everybody has their own thing. BCCI refers like cricket giving importance only to IPL before. One example is Khalid Ahmed after he had an excellent season for Delhi Capital, but he wasn't available for domestic cricket. But then how did Rinku Singh manage to get a name in the squad, and now he's in the Indian Lions team? Or Surya Kumar Yadav is there. He didn't go to Ranchi and play. So there are examples in from the It IPL is that the personal. That's where the personal point of it comes in. There might be kuch uske saath specifically. There might be a player specific problem. Chris Morris, yeah, and Chris Morris was there for 2 3 seasons. Not Chris Morris. I forgot who it was, man. But yeah, So I mean, yeah, that's the scene right now, unfortunately. But yeah, now if they're trying to start this process in the middle of a situation where they are with three youngsters, and best of luck to the BCCI to sort out. Rinku and Surya played domestic cricket, yeah, but they weren't outstanding in that thing. That's what I'm saying. They got recognized from the IPL. They didn't get recognized from the domestic circuit of things. yeah. Now Bumrah look too. at Like Surf. Why did it take slow? Then you can flip the argument. Say, why did it take so long for Sarfaraz, Rajat Patidar, and these guys to make a name in the red ball cricket? Because they didn't perform in the IPL. but also like that's the thing, right? And like we don't know ki what is right or wrong. I don't know. Maybe you know. I don't know what is right or wrong because Jasprit Bumrah also मेरे को याद है उसको आईपीएल से ही उठाए धोनी उसको लेके आया T20 वर्ल्ड कप खेला 2016 उसके बाद the guy hasn't looked back bro. He's played test cricket but he's your main guy. He's a product of IPL. I don't remember his name Ranji Trophy में. I could be wrong but I don't remember. Fez, if you remember you can tell me but Yeah, I don't remember. I don't I don't know. remember. Yeah. अब मेरे को याद है उन्हें 2015-16 में आईपीएल की थ्रू सिराज आके भी था डोमेस्टिक खेला, सिराज भी था डोमेस्टिक, बट इसका नाम विराट ऊपर तो मेरे आया, को याद है हाँ उन्हें खेला खेला, था बट आईपीएल से उसका नाम बूम हुआ। बूम तो आईपीएल ही करा ना। लाइक इवन उसका मैं बोल सकता हूँ लाइक थोड़ा मैं बोल दे सकता हूँ कि उन्हें खेला रणजी ट्रॉफी आई रिमेंबर हिम पिकिंग अप विकेट्स एंड डूइंग अ वेरी गुड जॉब बुमराह तो आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग एंड इट वर्कड लाइक यू नो इट एक्चुअली वर्कड बुमराह इज योर मेन गाय नाउ सो वी डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग Well, yeah, I mean, we don't know what's right and wrong, but it's just there are different ways to look at it. Like Todd, क्या है Todd ही ना इसका? Todd, right? Yeah. Todd बोलने हैं Todd. क्या बोल रहे भाईजान? Bumrah was playing domestic matches with Aksar before. I mean, exactly what? Where did you hear his name? Like, where did he come from exactly? I don't think he came from because of his domestic performances. They all came because of their Yeah, IPL he got performance. faster because of IPL. There's no way Tejas that he got picked from Ranji Trophy, bro. He got picked because उन्हें मुंबई में विकेट निकाल रहा था. I'm sure. Jaiswal also I don't know. नाम आप सुने कहाँ से नाम सुने आप IPL से नाम सुने बेचारा बहुत स्ट्रगल करा है डोमेस्टिक जायसवाल क्रिकेट तो काफी लोग खेलते ऐसा नहीं है कि नहीं खेलते लेकिन नाम काम फैज का यही पॉइंट है उठाते कि कहते उठाते कहाँ से या फास्ट उठाते ट्रैक कहाँ लीग से होते हैं आईपीएल में लाइक यू नो अभी ये जो नया ये पत्थर इन लोग सरफराज इवन दो दे प्लेड आईपीएल आल्सो बट इट्स बिकॉज़ ऑफ द परफॉर्मेंसेस ऑफ रणजीत दे बीन पिक्ड लाइक आई अंडरस्टैंड लाइक एंड इवन जसवाल ही इज परफॉर्म्ड बट पहले के जमाने में इट वर्कड लाइक बुमराह लाइक he got fast track because of his Mumbai Indians performances. Hardik Pandya also. या उन्हें तो खैर हाँ फास्ट या हार्दिक पांड्या है बहुत निकल के आते अभी दिमाग में तो प्यार ही नहीं ज्यादा बट या you have to say that IPL has been a very big factor in selection process. Yeah, I think, I mean, I don't know if that pretty much wraps it up or not, but it'll take time, 2 days more to us to actually get to the action. हाँ आईपीएल के कारण ही आते हैं पर डोमेस्टिक खेलना बहुत है इम्पोर्टेंट वो स्ट्रक्चर आप बनाए नहीं ना तो प्रॉब्लम ये कि आप एक के लिए ये बना रहे स्ट्रक्चर दूसरे के लिए ये स्ट्रक्चर बना रहे प्रॉब्लम आज यही है आपके साथ बुमराह एटलीस्ट अपनी कंट्री के लिए लॉयल तो है ना अय्यर की तरह जब जरूरत है कि इंडिया के लिए 100% दे रहा है जब मैनेजमेंट बोल रही है रांची खेले तो क्यों नहीं खेल रहा अय्यर अब देखो भाई अय्यर के तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम होंगी बीसीसीआई भी अय्यर से कुछ कराऊंगा नारा हर चीज में लाइक मैं उल्टा भी कर सकते बुमराह तो अभी इंडिया में टेस्ट मैचेस खेल रहा पहले तो उन्हें खेलता ही नहीं था इंडिया में उन्हें रेस्ट लेता था उमेश यादव और इन्हें सिराज डालते थे शमी डालते थे आपको याद है फैज बुमराह कितने खेला टेस्ट मैचेस इंडिया में उसको खाली अवे सीरीज में खेलते थे उन्हें भी सिलेक्टिव खेलता था आईपीएल में फिट रहता था अब ठीक है उन्हें लॉयल्टी दिखा रहा बट लाइक सबका टाइम आता सबका अलग रहता वैसा तो आर्ग्यूमेंट्स तो चलते रहेंगे आर्ग्यूमेंट्स तो चलते रहेंगे
देखो भाई, एट द एंड ऑफ द डे अच्छा अच्छा खेलो जीतो, एट द एंड ऑफ द डे वही है। आई थिंक एवरी फैन वांट्स दैट, बट फेयर प्रोसेस तो शुरू करना पड़ेगा। इट्स लाइक अभी कभी ये दिखता है, कभी वो दिखता है। अगर आप संजू की स्टोरी देखो तो वो तो अलग ही बेचारा अलग ही सिचुएशन में फंसा हुआ है, एंड देन एकदम तिलक को आप फास्ट ट्रैक कर दिया। तिलक वर्मा कहाँ से आया? आई मीन ही प्लेड रणजी, बट उसका नाम मुंबई इंडियंस से आया। रणजी रणजी से आया, बट ही आल्सो गॉट फास्ट ट्रैक बिकॉज़ ऑफ आईपीएल। उसको मगर आईपीएल में जो पिक करे थे वो टाइम पे मालूम हो गया था कि इन्हें खतरनाक प्लेयर है, एंड दैट्स व्हाई लाइक पीपल ही गॉट दे बिड हिम, they bid quite a bit, I think against Sunrisers for that bid, and they bid quite for him. मगर पॉइंट ये सब लाइक यू नो लाइक ठीक है, लाइक जो भी है it still works out in certain situations. Sometimes it looks very bad and everything like that, but because of your population, because of this all this politics, this and that, it's not going to be a smooth process, and you don't have to accept that. You can put your argument, just as Shane bhai bol rahe, he has every right to be not happy with it. And maybe one day, like you know, if you can influence that, then good, but it's always going to be confusing and complicated. कोई no fans खुद confused है कि भाई BCCI, मैं भी confused हूँ, like we're both confused. We still don't know what the problem is. BCCI, Shreyas Iyer, Ishan Kishan, we're all confused because we don't have any we don't have the correct information, and this is always going to be a problem. We're just sides and we're giving our opinions, मगर ना उसको मालूम है फैंस को, ना मेरे को मालूम है भाई क्या हो रहा। भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है के अलावा भी भाई आप स्ट्रक्चर अगर बना रहे तो वो कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि आप मतलब एक टाइम के बाद आपको दिखता है कि बीसीसीआई अपने मतलब के हिसाब से प्लेयरों को खिलाती, मतलब हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब वही बोलते ना, लाइक आप यूज करके फेंक देते। सो दैट आल्सो यू सीन विद सम प्लेयर्स। तो आई मीन एट एंड ऑफ द डे अगर आपको खेलना है तो आप एटलीस्ट रूल्स फॉलो करो, बट आप रूल्स क्लैरिफाई भी करके रखो ताकि लोगों को समझ में भी आना चाहिए। बिल्कुल। अभी के लिए देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, सरफराज में ट्रायंगल सीरीज होने वाली है, कौन हु गेट्स द स्लॉट। डू इंडिया गो विद टू पेसर्स विद सिराज एंड क्या बोलते बुमराह, और डज आकाश दीपक गेट अ कॉल अप एज वेल? उन्हें भी बॉलिंग ऑलराउंडर है। वेरी कंफ्यूज्ड अगर उन्हें आ गया तो unless there's an injury, then it'll probably be Bumrah and Siraj. But yeah, अगर बुमराह को रेस्ट करे तो फिर आप आकाशदीप को ही देना पड़ेगा। बट देखेंगे आप क्या क्या होगा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस टुडे, शेन भाई, तेजस भाई, थ्रू आउट, इब्राहिम भाई एंड एवरीबॉडी एल्स, कार्तिक भाई एंड सो भाई। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जल्दी मिलते हैं होपफुली। थैंक यू सो मच।